we are live. Bhai, if anybody is in the chat, let me know. Let me check if the live stream is perfect. Let me see it. देख लेगा यार आज जैसे ही वो लाइव It's चला my जाता है मैं first लिंक time. भेज दूंगा नोटिफिकेशन आ गया भाई, चिल स्ट्रीम विद स्नेह चिल स्ट्रीम विद बॉयज Bro, आज push notification विद on. बॉयज। मैं ना तुम दोनों को लिंक भेज रहा हूँ एक सेकंड रुको मैं वो ओपन इन ऐप कर देता हूँ बस भाई यार ये ना इंस्टाग्राम का सीन है इंस्टाग्राम हाँ। डोंट लेट लाइक दे ओपन द सीन एंड इट जस्ट ओपन्स ऑन द इंस्टाग्राम इटसेल्फ तो मेरे को हर बार लिंक एक उससे जाना ओपन इन ऐप से जाने देना पड़ता है फिर भेजना Yes. पड़ता है एंड दैट मेक्स इट अ बिट ऑफ लाइक डजंट मेक पीपल क्लिक इजीली यू नो Right. थोड़ा वो सीन रहता है With cheating. ठीक है। देखो लिंक भेजा है यस ये सर। जाएगा स्क्रीन पे chat Yeah. if anybody is here please let us know Yes. क्या There are आवाज सबका सही आ 3 रहा है people बस बता देना watching. भाई 4-5 लोग आ चुके Join हैं the already. stream, guys. Let's go. Chill Yes. stream with the boys. Sneva is here. Deva is here. Let's go भाई Newest member of the panel. He Newest is member pretty of the panel. excited. So let us Yes, support the I'm ready. boys. बहुत मजा आएगा. चैट आराम से बैठो भाई आप लोग आज ठीक है सवाल वाल आपके जो भी है आज पूछ लेना जिस भी टॉपिक के बारे में जो मन करे पूछ लो बस आज बैठ रहे चिल करेंगे भाई Sneh, I wonder if there are people here who are excited about philosophy. क्योंकि अगर है तो बहुत मजा आएगा. Bro, that is going to be a major discussion. Philosophy. It is. Yes. And I just recently saw your political ideologies वाला video. It was हाँ. pretty good. It was pretty good. I'm So that is also a continuing. discussion that we could raise. Like I'm continuing a series. I'm exploring now what are Indian political scene as a whole, all the parties that are there, all of the history से लेके सब कुछ. So I'm exploring that कि हर एक उसकी ideology क्या है, political leader जो famous है उसकी ideology क्या है, उन सबको explore कर रहा हूँ धीरे-धीरे. तो हाँ, it's a whole journey. 7 दिन तक मैं explore करूँगा अलग-अलग चीजें politics के बारे में. And I'll probably make something. बट यार मेरे को ये भी पूछना था तो हमारे यहाँ पे ना ये एक YouTube पे मेंबर्स नाम की चीज है ठीक है तो यू कैन पे अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड बी अ मेंबर ओके देयर इज ओशो से फॉर एग्जांपल हु रन्स ऑन मेंबरशिप देयर आर मल्टीपल समय रैना रन्स ऑन मेंबरशिप हाँ समय रैना पूछना था कि कोई ऐसा कंटेंट कि जिसके लिए लोग पैसा दे सके कुछ ऐसी चीज करना लाइक ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ सुपर चैट इज समथिंग मतलब काफी सारे स्ट्रीमर सुपर चैट से बहुत कमाते हैं बट यार वो तब होता है व्हेनेवर से फॉर You have an एग्जांपल audience. इग्नोरिंग द चैट ओके अच्छा हाँ अब यहाँ पे 2 चैट आई है अब मैं तो आराम से पढ़ लूंगा तो मैं क्यों इग्नोर करूंगा क्यों कोई आदमी सुपर चैट करे समझ True. हाँ वो भी है तो सुपर चैट है चैनल पे लेकिन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम You could give paid courses. I could do paid courses see Yes. I am already selling products for those who don't know everything का products है ठीक है चेक इट Yes. आउट कल लॉन्च भी है यस तो वो तो मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं कोर्सेज डालूंगा ना तो मेरा जो है ना वो पैसों का वो कुछ ज्यादा इन्फ्लक्स होगा तो आई डोंट वांट टू डू दैट आई वांट टू प्रोवाइड अ कम्युनिटी एज सच कि जहाँ पे लोगों को उसका मिले See, I think there should be a Discord server, where people come and discuss about all sorts of things. And talking about everything, by the way, I have the hands-on world, जो desk mat है. I'm using it right now. It's pretty cool. अच्छा है ना भाई परफेक्ट है चलो एनीवेज लोगों को लग रहा है कि मेरी आवाज धीरे आ रही है अच्छा. हमको डर था कि देव की आवाज धीरे आएगी सिर्फ एवरीथिंग का फ्लास्क लेने गया था भाई स्पेशली Oh. लुक एट दिस फ्लास्क लुक एट दिस प्रिस्टीन ब्यूटी आई मीन आर्ग्यू फेस्ट की ट्रॉफी से ज्यादा तो मैं फ्लास्क को देखता हूँ अरे सो स्लीक सो ब्यूटीफुल थैंक यू ब्रो ज्यादा मार दिया नहीं ज्यादा बोल दिया ज्यादा आई मीन यू कैन से एचएसजीसी से बेटर है ऐसा बोल सकते हैं अरे 100% वो हाईकॉम की ट्रॉफी से तो काफी बेटर है हाँ हमको तो वही हाईकॉम की ट्रॉफी में तेरे को हाई रिकमेंडेशन अवार्ड मिला नॉट हाई कमेंडेशन अवार्ड इफ यू रिमेंबर if funny thing actually so we expect a lot out of HL and we expect it to be pretty much flawless but the trophies basically instead of high commendation it was written high recommendation and the RE was blurred out basically Yeah. so that was not expected from HL and the worst part is that the glue was very much visible in the end
It was visible by Exactly. those high recommendations. They did not even make the effort to remove that group. मतलब ठीक I है, mean, मतलब ठीक है भाई, मतलब गलतियां होती है भाई it's सबसे, fine, मतलब it's fine. Like बहुत एमयूएन तो बहुत अच्छा था भाई, they The didn't management विदाउट was डाउट. they didn't put the expectation on themselves. No, they were more about the target, their target, and getting everybody organized. So I'm sure it was a good event. It was a fair thing. yes. The secretary general was a pookie guy. हमने expectation ज़्यादा रखा था, बाकियों ने Secretary general. फूकी का है. अरे अरे वो तो अपने ही है ना, अपने yes. कौन कौन? Who was the section? I don't remember. अरे अपने जो ओसी थे ना पहले हम Yes. Oh, अरे जीत भाई, of course. एग्जैक्टली. Yes. जीत भाई was amazing man. हाँ You know, he was very sweet, and मतलब कोई भी problems थी तो we could just openly approach Yeah. to him with the problems, and he would help us बट very ठीक है ना, much. ये टीवी नहीं बनाते, ये क्या रिव्यू कर रहे हैं मेरी कम्युनिटी को, छोड़ो भाई. मेरा एक अच्छा हाँ सवाल है, ठीक ठीक है, है. मेरा एक सवाल है. हाँ. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. इट्स ऑफन सीन कि जिस चीज पे तुम सबसे ज्यादा काम करते हो ना, सबसे ज्यादा एकदम ऐसा मेहनत डालते हो किसी भी चीज पे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो चीज ही काम नहीं करती. Right, हाँ. whatever I have done on my channel, wherever I've worked really hard, the thing has not worked. And wherever I have not worked or wherever I have not paid attention, has worked. Is this only like my ignorance of what works on YouTube, or like that is what happens in life also? Ki wherever you don't pay a lot of attention, that thing works. I What is think this? I don't understand this. see, I think it is a bit of both. It happens very much so in life. I mean, we all have experienced as delegates that we've worked very hard on a particular MUN and we still got the HICOM or the SpecMen. That is not a good feeling. And we completely empathize with you here that working really hard on a detailed video and the video is still not working out. Even let's say, for example, me and even Shivjani, we were both in the same cricket academy and we worked really hard for cricket. But I guess it just did not work out for us. And that is life. Sometimes it does not work out for you, for us. True. On the other hand, I think it is also to a certain extent the attention span of the viewers. That is something that we have to consider. So let's say, you know, the common viewer, especially the people that follow you through the immune circuit, a lot of them are going to be school children, right? And they are pretty much habitual of watching reels and shorts or scrolling through Reddit. They are very habitual of it. So when you tell them to watch an educational video, a video that is, you know, intellectually stimulating, but it is not very entertaining for them, they would not be willing to click on and watch it. It is because of their attention span and also due to their lack of understanding of certain complex topics. So for example, our work act discussion, panel discussion. Unfortunately, I was not able to join the RG car or IPC one. But our WAFC Act discussion was pretty detailed. It was pretty good. There were a lot of viewers and it got pretty good reviews, right? Yeah. But a lot of my friends who were not from that law background, they did not understand a single thing. True. They asked me कि भाई क्या बोला समझा मुझे, you know, show me your notes so that I can understand it better. So I guess I guess it is the complexity. Yes, it should be more simple and more entertaining for them in their sim. नीचे वो Subway Surfers वाली clip आती है ना, वो डाल देने की. And I honestly am not like targeting MUN as a whole. Like, मैं इसीलिए MUN नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को ऐसा ऑर्गेनाइजर बना, क्योंकि ये चैनल को तो लोगों ने ऑर्गेनाइजर ही समझ लिया है. नहीं मुझे तो पता है वो. मैं अपनी पहली HLCC MUN में अपन मिले थे, अपने दोनों की पहली MUN थी. तब से तू वीडियो तो बना रहा है, वो स्ने फिलोसफी की पूरी चैनल पे. वो creating content since a long time. I know that. Where actually they told me a very interesting story about that. I'll explain that. But yeah, एक ये भी है मैसेज आया. रिक्वेस्ट नहीं भाई, आप हिंदी में पॉडकास्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम किया करो. आपके वीडियोस तो अच्छे रहते हैं लेकिन लैंग्वेज के कारण समझ में निकालती है. So yeah, this is also an interesting insight. Very this good. is something that what I have in mind is like अगर मेरे मॉम डैड को समझ में आ गया ना कि वीडियो किस बारे में, तो वो वीडियो अच्छा, ठीक है. लेकिन से फॉर एग्जांपल कृष्णा वाला पॉडकास्ट, भाई मैंने एकदम बैठ के गीता से एकदम ऐसा प्रॉपर निकाला था, प्रॉपर प्रॉब्लम्स डाले थे, सारा हिंदी में था. तो लाइक दैट आई एम नॉट गेटिंग अ क्लियर इनसाइट, क्लियर आंसर फ्रॉम पीपल कि मैं ट्रेंड पे डाल रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है, हिंदी में डाल रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा है. कोई ऐसा रैंडम वीडियो का जो अचानक से फट जाएगा, मेरे को कुछ पता नहीं क्यों फटा, कोई रीजन नहीं उसका, कोई एनालिसिस नहीं. I think Sneh, the
problem here is the gap of context between what goes on in your head and what goes on in the viewer's head. Okay, you as the creator, you as the artist might have had a certain story of trying to get into understanding a particular concept or a particular philosophy or a particular political ideology, right? So, तू क्या करेगा? You would have deep curiosity about that particular philosophy. You would understand it inside and outside, and you would make a very hard worked video on that. Okay, and to expect करेगा कि हाँ भाई ये जो मैंने सोच के बनाया है मस्त जो overview पूरा दिया है. I even looked into what makes people happy, and I tried to incorporate those aspects into the video, and it did not work. It did not work not because the video was not good. It did not work because the same things which were in your head when making the video, the same curiosity that you had while making the video, the others might not have had that. किसी और के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा. And you know what? I've noticed this in my college. A lot of people do not read books. They have no background of such curiosity into philosophy and etc. But one day what happened was कि हम लोग randomly college में जा रहे थे, and there was this bookstall. एंड वहां पे मैंने किसी को मार्क मैनसन की सटल आउट ऑफ नॉट गिविंग अ फक रिकमेंड कर दी एंड ही पिक्ड अप दैट बुक ओके Quoted. एंड दैट बंदा डज नॉट रीड इंग्लिश एट ऑल ओके बट ही ट्राई टू रीड इट एज वेल एज मच एज पॉसिबल बंदे ने एक वीक लेके 50 पेजेस रीड किए एंड उसको समझने की कोशिश की नाउ टर्न्स आउट हम लोग अब ना फिलोसफी झाड़ रहे हैं क्यों क्योंकि इट इज अ थिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अस इट्स नॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू express myself or make you understand stuff. It's just because we're trying to have fun here. So I think the difference of context here is very much important. तो इसलिए रैंडमली कोई सारे वीडियोस ब्लो अप हो रहे हैं क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा and that might have struck the note in their head. Yes, one more thing I would like to build up on that point, that there might be a difference between the perspective of the creator and the viewer. So, matlab, let's say कि you think of this particular topic is very interesting, like of having a conversation with Sri Krishna or Jeff Bezos or whatever it is, and doing a detailed study on it and whatnot, right? But see, here's the thing, Sneh, for example, a person like you and a person like me, we are very much interested into podcasts, we are very much interested into philosophy, that side of things, right? And a lot of people are not interested in philosophy or those things. So I think you can try something new altogether. मतलब कुछ एकदम नया type का video. Like I saw your polls. I think it is a great initiative that you're taking, trying to understand the viewers. मैंने देखा polls में सबने education लिखा और philosophy में vote किया. किसी ने कुछ entertainment में वो vote नहीं किया. But जब philosophy में videos डालोगे कोई नहीं देखेगा. Vote करने में अच्छा लगता है कि भाई intellectual में डाल रहा हूँ. बट देखेगा कोई नहीं. दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी. मैं भी कभी कभी आई लुक एट द वीडियो एंड आई थिंक दैट यार छोड़ना अभी. After having a long day at college, I might come back and not prefer to watch a video where it makes me think. I would rather just watch a reel. वो doom scrolling बहुत easy हो जाता है. True. So make something that is out of the box, something new. वो तो है. लाइक मैंने ना ये देखा है कि पीपल ये 2 पोल डाले थे. पहले पोल में उन लोगों ने ऐसा बोला कि वेयर वुड यू लाइक टू स्पेंड योर मनी, समथिंग दैट विल टीच अस. उस पे सबसे ज्यादा वोट था. लेकिन वेरी नेक्स्ट, वेयर डू यू स्पेंड योर मोस्ट मनी, उस पे नेटफ्लिक्स और अमेज़न सबसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न आया, राइट. सो दैट इज समथिंग कि चाहते क्या है तो कि हमें कुछ सीखने को मिले, लेकिन होता क्या है कि हम उधर स्पेंड. But like that is something that happens with life also, na? You work hard, expecting a particular direction, a particular passion, where you feel it is the right way to do. कि भाई ये मेरा career path होगा, ये मेरी चीज होगी, इसमें मैं ये मेरा passion है, ऐसा बोल के चलते हैं, ठीक है. एक तो यार passion से ना मेरा थोड़ा वो गुस्सा होने लगा. तो like we follow that particular path, ये सोच के कि भाई ये मेरा passion है, इससे ही मेरे को चीज मिलेगी. लेकिन हर एक बार जिंदगी में यही होता है ना कि पैशन सक्सेसफुल नहीं देती, राइट? बिकॉज़ इवेंचुअली इट डजंट टर्न आउट वेयर यू एक्सपेक्टेड इट टू बी. That is something that happens. I think we could indulge into the ideologies of Buddhism here. So the core principle of Buddhism altogether was that desire is the root cause of all problems. Yes. Right. Suffering. So if you suffering, yes. So if you desire something very strongly, and let's say you desire, you sort of expect things out of people or out of situations or out of actions, I think, and especially keeping very high expectations, high desires for something, you are
sort of doomed to feel not positive after the outcomes. So expectation, वो बोला है ना गीता में कोट है कि हाँ. कर्म करे जा फल की Expectation. चिंता मत कर. I think वो वाली core philosophy Yeah, you can. true. But But I would think, you agree that having goals is very much important, that there should be some particular point which you would like to strive towards, See, right? there is a In, difference between having goals and there is a Hmm. difference between being attached to certain outcomes. True. When you Agree. become attached to that outcome rather than just the process, even though you're doing really good in the process, I'm not talking about your example, just a general discussion. हाँ. When you attach to that outcome, okay, I want to win that particular award, and it is the award that you're thinking about, but you're not willing to go through the grievous process of winning the award, or you're not as interested as working hard for it, and you're just thinking about the award altogether, Hmm. then you're going to get in this cycle of misery, sort of. But if you So, were at my place, what would you हाँ, make? If you were at my place, what would you make? I mean, कमेंट्री वीडियोस, आई थिंक रिएक्शन वीडियोस हो गए, कमेंट्री वीडियोस हो गए, वो काफी अच्छा है. Okay. आई थिंक अ ग्रेट आइडिया वुड बी मीम रिएक्शंस. उस पे काफी व्यूज आएंगे. मीम रिएक्शंस बहुत, इट इज वेरी ट्रेंडिंग. और सी, आई थिंक वो एमयूएन के रिलेटेड जो मीम पेजेस काफी सारे बने, काफी सारे बन गए, अब तो 2-3 है शायद से. तो Yes. उसके मीम्स पे रिएक्ट करके यू कैन पुट इन वीडियोस लाइक Yeah, वो I mean, I can, but it's like very हाँ. different audience. That is not the audience that I desire to target नहीं, at all. हाँ Like, I मतलब don't want MUN audience to be on the channel because they are a very different personality as me. Right. सर, वेरी बोल्ड ओपिनियन यू हैव I राइट mean, नाउ. I love to have them. I love to have most of the people that are there. But whenever they are coming, they come for knowledge, not for हाँ, sharing their opinion or choosing this as a platform. This is not MUN. हाँ, सही है, सही Right? है. This is a very different thing. This is your interaction with Snake. That is why the channel name is Snake Khatri and not any organization. Whenever I start an organization, it will run it as an organization, सही है, You know, सही which है. I'll never do. what you could do is reaction videos on, say, certain YouTube video. Imagine, see, for example, Meme reaction. no, Reddit. not meme reaction. Videos which might have certain opinionated reaction possible. For example, there was this particular video where people judge each other's IQ based on their looks, based on the way they talk, and etc. Very good idea. Right? And usme in the end, it turned out that the person who was the most down-voted, कि इसका IQ तो जरा होगा ही, he turned out to be the best performer in the IQ test. On the other hand, the person people thought would have the highest IQ had the least IQ. And usme there is a ton of psychology going on. There's a ton of social psychology we can Yeah, comment yeah. on. People, how they behave in front of each other, etc. That I think Sneh would have the brains to talk about in this video. Yeah, true. This is also a nice thing. Thinking, what do you think about reactions to Lok Sabha and Rajya Sabha session? Like there could be Rajya Sabha mein for the first time India came into majority, as much as I know. yeah, Shall I say. mean, can say, but like मतलब I personally think feel they हाँ, they are still going through a very hard time and they are. generally अभी तक जितना हुआ है 10 साल में जब भी BJP has gone through a hard time, they have often bent down. Okay, they have not took the way that they should. The only points where they have been aggressive is where they know there will be no opposition. Say, for example, when they are going against Pakistan or something like that. हाँ, Like there is no chance of opposition there. Only then they take steps. Wherever they have like faced some problems, they choose to bend down easily. So now that they don't have majority as such, or there is an alliance-based government, so there it is way more, pussy behavior there. what behavior? It is something that we will see in during Maharashtra elections also. The results. Wait for the results of Maharashtra elections. Things will change a bit. Yeah. Of course, they're gonna lose. Like that should be clear. But why I think abhi they would still prefer to go on with the bills that they're trying to promote. वो वफ अमेंडमेंट बिल हो गया, यूसीसी हो गया, Yeah. प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला हो I'm गया. not sure. I mean, I'm not sure. That मुझे लग रहा है now things I will be think those crafted bills will much come and more in the way Congress wants it. Like will So you're not saying that pass. they're reacting. Is that what you're saying? So yeah, the idea was, I'm so sorry, but idea was to react on those things. Like say there were many subtle hints when it comes to Lok Sabha.
like how speaker speaks to the opposition or the person speaking, how the people respond to the other politician interrupting. Hmm. So that interaction is also something which is a communication masterclass, and it's like a, pretty good analysis to have, but they are too long. That is what the issue is. हाँ वही Yeah, attention span वाला issue आ गया अभी. Yeah, but it would feel like they're having a conversation with you, wouldn't it? If you're just reacting to the videos and making sure that your opinions I are can speak on expressed anything. naturally. That is something that I discovered. बोलना है मेरे को आता है, और कुछ आता ही नहीं, तो मैं किसी पे भी कुछ भी बोल सकता And that would give people the chance to look into your mind, because when you're making a video on artificial intelligence talking between an AI interview between Dr. Baba Sahib Ambedkar and Mahatma Gandhi, that is something that you plan before, right? That is something हूँ. that's not Yes. spontaneous. On the other hand, if you react to videos spontaneously, that would show how you actually think. Yeah, I do write down everything. Like, say for example, what Savarkar would answer to that particular question. I refer to his documents. I correct all of the stuff and then after write it. So it is an extensive process. एक दो दिन तो सिर्फ उसी में जाता है कि ये आदमी क्या बोलता है, ये आदमी क्या बोलता है, मैं इसके बाद Exactly. क्या बोलूँ. Social फिर वो commentary, interaction डालना पड़ता है. I think social commentary videos would do very good. जैसे ये बोला ना देव फॉर एग्जांपल कि IQ के हिसाब से रैंक करो, वो वाले वीडियोस काफी चल रहे हैं. सो Tier list फॉर वाला ना, हाँ हाँ कुछ वही like ये for example it was a similar situation where they had to rank a person on their intelligence, and there was a person who was a war veteran, right? So they thought that he's a war veteran, he's very bullish and he might not have the brains to do anything else, and there was this girl who was acting very cocky that I work in this particular medical field, so I might have a higher IQ, and they Yes. shamed him for being a war veteran. It turns out he had the second highest IQ of all of them, and the girl who was saying medical wala thing had the least IQ. Now, see, me just explaining this to you, a lot of people might have opinions on what I just said. A lot of people might think कि यार war veterans के खिलाफ तुम ये perception preconceived notion डाल रहे हो. That is very shameful. तो radical opinion आ गया, तो indulge करेगा उस चीज में. And then you compare that to काफी लोग ये कहेंगे कि भाई आप you think that a woman was cocky, so that is wrong. That woman was not cocky, that is your perception. आप सोच रहे हो कि woman cocky है, वो गलत चीज है. आप misogynist हो, कोई ऐसा भी बोल दे, who knows. पर वो दो अलग जब व्यू आते हैं ना, वो कलेश होता है ना पूरा. तू बनना हाँ. 2 मिनट के लिए, तू टेट बनना. वो देखना है टेट वालों को, लोगों को दिखाना है टेट वालों. I consider myself to be a feminist. That is the ultimate tea, isn't it? नहीं नहीं, I am a feminist. I consider myself to be a feminist. ऐसा I- ये बोल रहा Why do we see the putification of Ayush, the feminification of Ayush? है. Feminification? Because of the friends he's See, hanging out with. But Yes, that's what I'm asking. what friends? What influences have you been a part of Ayush recently? भाई लाइव में है, क्यों बुला रहा है? My influence is Ryan Holiday. पावड़ा, इस पे करना है डिस्कशन. Obstacle is the way. More like Stoicism. Stoicism पे करना है डिस्कशन. The obstacle is the way. हाँ, कर सकते. कर सकते. What do you think? Not you, Ayush. I want to अच्छा. ask Dev. हाँ. Stoicism. I think Stoicism was born out of the I'd say Diary of Seneca, right? Uh, the the prominent Stoic philosophy that we read these days is just what Seneca and Marcus Aurelius said, right? And Yeah. was it letters from Marcus Aurelius or Seneca? It was Marcus Aurelius, right? It was Marcus- mainly Marcus Aurelius. Seneca Yes. was probably, I feel he was just passing out the thoughts. Yes. So what I feel is that Stoicism makes sure that the philosophies that we live by are very personal in nature. If you see that all of those philosophies are not you should do that, you should do this, you should live this way. It's I should live this way. I want life to be that way. I want myself to perform in a certain way. So in that way, Stoicism is one of those unique philosophies which personalizes our approach to life. It is born out of our aspirations with every single thing, and it is born out of a need of discipline. And that is what Stoicism is to me. On the other hand, the other philosophies, which are the Vedic philosophies or say Abrahamic religious philosophies, they are concerned with transcendentalism and otherworldliness and God and etc. And they are concerned with bridging the gap between this world and that world. On the other hand, Stoicism is like, fuck that. I just want to achieve what I want in life, and I would rather not care about the other worldliness, but what is in front of me and what I can do and what is in my control.
let So me yeah. try to like a shit little bit or continue the shit little bit on stoicism because I was just sitting here, so we'll do that. I feel stoicism पहले तो चीज फेल ठीक है फर्स्टली बिकॉज पोस्ट मार्कस ऑरेलियस thing got down a lot, Hmm. हाँ right? And it was something that I really felt where it was something that they liked for themselves but they were not able to do it, like just like Dave said that I would like to do this, I would like to do this, but they were never able to do it. So it's very Hmm. good as philosophy. That is what I think the purpose of philosophy is to keep your is to think about it, as simple as that. There should be no more purpose of philosophy in a deeper sense of implementing it in your life as such, right? That is something that I felt with stoicism. भाई तुम लोग नोट्स क्यों बनाने लगे? ये मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पे डिबेट करने वाला। अब आयुष आएगा कि अब मेरी बारी आने दे भाई तुम। नहीं, इट But इज अ गुड टॉपिक. हाँ मतलब वही प्रॉब्लम आ गया ना, व्यूअर्स सो जाएंगे अभी हाँ कि यार ये लोग भाई क्या भाई बात एक कर रहे हैं. ये सही चीज आई है। एक ना ये नए मार्केट में कुछ आया है, क्या? लूसीफर वाज Lucifer इनोसेंट। was innocent. अरे सर, थैनोस The बाबा. most problematic thing, like something that irritates me is this guy जे is हुई ना from बात. Rajkot. This guy is from Rajkot. तीर दिस फ्रॉम राजकोट. I अरे डैम. hate when Rajkot people does this type of shit. Like, इज अ 10 आउट ऑफ 10 राजकोट बैडियो मिथ. yeah man, I was like देखो मैं ना बहुत खुश हुआ था कि मुन्ना और फारूक की फेमस हो गई क्योंकि वो जूनागढ़ से, ठीक है, बहुत पास है हाँ. हमारे यहाँ। एंड आई वाज लाइक दिस इज रियली गुड, हमारे यहाँ से कोई फेमस होना चाहिए, ऐसा फील हो रहा था। तो पहले मुन्ना का था, हो गया मुन्ना फेमस, होगा। इनफेमस. लेकिन बीच में ये आदमी आया राजकोट से कहीं से पता नहीं क्या करके, और ये क्या उसने डाला है भाई, क्या क्या बातें कर रहा है वो। लूसीफर वाज इनोसेंट. लिख रहा है, guys, this was supposed to be a chill stream. Where are we going? Serious talks. नहीं We are है, चिली तो roasting. है भाई. We are roasting. वो रोस्ट करता है भाई, उसका वीडियो चालू करो, रोस्ट करते हैं तीर्थ परसारा को बैठे बैठे. डाला हुआ है रोस्ट एंड Roast and philosophy. पर भाई वो है थोड़ा दिमाग से पैदल भाई, ऐसे ही काम करता है तीर्थ. उसके नहीं, उसके शुरुआत के जो वीडियोस थे ना, उसके वीडियोस फनी थे. वो स्किट वाले वीडियोस होते हैं ना, वो कॉपी करता था खुल्लम खुल्ला हाँ कि इसका बाप का जो करना है कर, मैं कॉपी करूंगा वीडियोस, करता था और चल गया ऐसे कॉपी करते करते वीडियोस. तुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसे रील्स कॉपी करो, बेकार सी बनाओ. yeah we can. बैड क्वालिटी कंटेंट विल फ्लरिश मोर देन गुड क्वालिटी कंटेंट, अनफॉर्चुनेटली. मैं बस ठीक है. thumbnail pick करके बैठ फिर जाऊंगा। वो एंड्रोटेड बन गया, एंड्रोटेड बन गया आउट ऑफ द ब्लू, सिग्मा बन गया. तो द किसकी पर्पस बात ऑफ, हाँ ऐसा बोलेगा कि यू आर नॉट फोकसिंग द फॉर द राइट थिंग्स, राइट थिंग पे, ऐसा मतलब होता है ना कॉर्नी कि व्हाट द सिग्मा वाला. But बात किसकी हो रही है? हाँ और फिर उसका फेज आया नया. वो देखा था अपन कमेंट में मिल गए थे। सो एक्चुअली देयर इज बैडी राजकोट की भाई, क्या थी भाई वो। अरे आई स्टिल हैव इट इन माय नोटिफिकेशंस दैट वी इतने फाइंड इट. सालों से राजकोट में हूँ भाई, मेरे को नहीं मिली है। ये कहाँ से मिली? सिर्फ वो नहीं थी, उसकी दोस्त भी मस्त थी। Oh. हाँ भाई, see this is wrong. I mean, appreciating the beauty of a woman is different and objectifying a woman is different. So ऐसे you don't talk about a woman like this. You don't say कि वो भी अच्छी थी. नहीं, you don't talk about a woman like this. I will, No, as a feminist, I will not sit here and tolerate I will it. give you this pseudo feminism. I pull out the pseudo feminism out. ठीक है? The same thing that a man does to a woman by saying हाँ. that हाँ. क्या थी वो, how beautiful she was. We are in awe of her. The same thing women do. Yes. Right? It is something that we are doing publicly and they do it privately. Good for them. भाई मैंने तो कमेंट डाल दिया, इज अ 10 आउट ऑफ 10 राजकोट बैडिया मिथ. स्नेह बोलता है मैं बचपन से इधर हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं देखा ऐसा. नहीं देखी भाई। And वो एक्चुअली वडोदरा चली गई। हाँ, अरे मुझे लोग बोल रहे हैं कि वडोदरा की है भाई, राजकोट की हो ही नहीं सकते. मैं मानू ही नहीं राजकोट. ऐसा जहाँ तक मैंने देखा बचपन उसका राजकोट में था, लेकिन फिर of course स्नेह भाई, आप क्या सोच रहे हो, मतलब मारवाड़ी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले हो आप? नहीं Come on, कर man. दो, ओम सतानी को कंपनी मिल जाएगी. TikToks दे रहे हैं यार वो. ओम सतानी को कंपनी मिल जाएगी, टेडेक्स में एक और स्पीकर ऐड हो जाएगा, स्नेह खत्री. नहीं। व्यूज भी आएगा टेडेक्स का नाम होगा तो. मेरे को उस पे कुछ बोलना नहीं है। सही है भाई. Come on, say impact of AI on unearthing history. TED Talk by Sneh Khatri, Marwadi University. How does that sound? ऐसा ना ये टेड टॉक का सीन होता है that you need to like I have been invited to Josh Talks I think. Josh Talks. हाँ, Nice. उनका ऐसा सीन था कि they need a certain reach to invite you.
You just cannot be an individual who can speak on stage to be invited. तो उनका ऐसा था कि 2000 लोगों तक आपकी पहुंच है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, तो आप हाँ आके बोल सकते हो. So they invited me and I was of course not interested. But then after they rejected me by saying कि आपके पास 2000 करीब हैं इसलिए हम आपको नहीं invite. मैं कहा मेरे को आना ही नहीं है, आपने इनवाइट किया, मैंने मना बोला, तो आप मेरे को ये क्यों टिपिकल बोल रहे स्नेही को. हो? I mean, I'm thinking like मैं उधर जाके अभी बोल दूंगा तो फिर आगे कुछ कहने को नहीं रहेगा ना, कैसा चलो लगेगा? स्नेही भाई का रोस्टिंग सेशन कर देते, क्या कर बोलते देते हैं? हो भाई, कर देते हैं भाई. हाँ, What is करो. the last comedy skit that you have seen? Tell me about that. I am loving stand-up comedies. अच्छा स्किट मैंने Like नहीं अभी, मतलब मैं ना पुराने वीडियोस वापस देख रहा था, तो आकाश गुप्ता का वो वाला है ना, हाई स्कूल वाला, कॉलेज वाला, कौन है, जूनियर कॉलेज, यस, बहुत सही वीडियो था वो. you guys जूनियर see कॉलेज. anything out of India? आउट ऑफ इंडिया केविन हार्ट में देखता हूँ. इट माइट सीम टू क्लीशे, पर मैं उतना बड़ा मतलब फैन नहीं हूँ मैं. It's a good start. हाँ, वो नेटफ्लिक्स पे आती है ना, केविन हार्ट हो गया, वो सब के वीडियोस देखते रहता हूँ मैं. एंड देयर वाज दिस श्यूमर, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट हर नेम, लेट मी गूगल हर नेम. एंड आई लुक्ड एट हर वीडियोस और मुझे लगा दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स कॉमेडी इटसेल्फ. उतना गंदा कॉमेडी करती थी वो. भाई बहुत सही है कॉमेडियंस तो मैं उधर like of course एमी शूमर ही है ना? हाँ, एमी शूमर. ब्रो द प्रॉब्लम विथ हर, वही उसका प्रॉब्लम यही था ना कि मतलब वो आके बोलती थी कि यू नो शी यूज्ड टू पुट अप जोक्स लाइक माय वजाइना एंड दिस एंड दैट पीरियड्स, एंड वही उसी पे उसके जोक्स होते थे. फीमेल कॉमेडियंस और उसके जोक्स एंड दे वर प्रीटी मिसएंड्रेस्ड इन नेचर. मिसएंड्री उसके बहुत ही मतलब कॉमन थी. वो आके बोल देंगे कि मेन आर वियर्ड क्रीचर्स, वी आर सुपीरियर देन मेन, ऐसा कमेंट्स पास करती थी वो. few female comedians that I have found out to be really funny. Like say for example वो नहीं है जो स्लो बोलती है अपने यहाँ पे, स्लो बोलती है. एकदम ऐसा स्लोली बोलती है. Chad, if you know her name, please put it in the chat. But she speaks very slow. She has a very distinct style to her, and she is killer. She is the only funny female comedian, even like considering outside comedian. Because I watch a lot of English comedians. There are some of my favorite, like say for example Jimmy Carr. एक बार भाई उसको देखो, one of the darkest comedian existing. Christianity fears Jimmy Carr. Yeah, Jimmy Carr, crazy. Then after, if you want to see the most creative act, say for example, you check out Bo Burnham. Okay, one of the most creative acts. So that guy basically, some of them are saying that they can't hear me. That is problem I cannot solve right now. मेरे को पता नहीं कैसे हो रहा है, but ये हो रहा है. ठीक है, मैं थोड़ा ईयरफोन से करते हैं, ऐसा होता है. ये इससे माइक से आ रहा है ये. वो बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रहा है क्योंकि आई एम नॉट श्योर. अभी हमको तो सही आ रहा है वैसे. हमें तो सुनाई दे रहा है. So the thing is कि हाँ. Bo Burnham गाने बनाता है. He writes song and he does comedy inside song. अच्छा. भाई crazy thoughts, crazy observations, कुछ ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व करके बोल देगा ना कि तुमको ऐसा लगेगा भाई क्या बोल दिया ये, क्या बोल दिया. I think Veer Das is very underrated, bro. Criminally underrated, I He's say. not underrated, I mean. He is. I mean, मुझे he लगता might है. not be in the talks right now because he's an English comedian. But हाँ. he's definitely underrated because मतलब he's the वो- one who started I stand-up. think Mainstream जितना होना चाहिए उतना नहीं है वो. he's very niche, I'd say. हाँ, niche. His audience is very niche. He's English speaking. As the comment, as say for example, stream में भी No. बोल रहे थे कि हिंदी बोलोगे तू ही तो मेन स्ट्रीम में आ सकता. No, his audience is not just English speaking. His audience is also intellectually He's not stimulated. underrated because he's representing India outside. As हाँ. okay, he's नहीं. an Indian comedian who people know. No, I think thing his audience is one of those, let's say, leftist woke people mostly. Like say So- for example, जो रोगन सोचेगा कि मेरे को इंडियन कॉमेडी सीन से किसी को पॉडकास्ट पे बुलाना है. हाँ. तन्मय भट्ट को नहीं बुलाया. उसके दिमाग में वीर दास ही आएंगे कि that is what they know. That is the representation. That is how we think about representation. रोहन जोशी का क्या कहना है? I think रोहन जोशी has become this sort of radical political ideology he has. और वो ना एक पर्टिकुलर लेफ्ट विंग को इतना ज्यादा रेडिकली सपोर्ट करता है that you sort of lose interest. मतलब I follow you for your comedy and it is not comedic anymore. एक तो ना मेरे को इस कैरेक्टर के बारे में बात, ठीक है, नेक्स्ट लाइव इज फनी. वैसे इतना गुस्सा हूं ना भाई. The guy is not picking up my phone. The guy is not answering my message. I don't know what he is doing. पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में. भाई वो बड़ा इंसान है यार, स्टैंड अप कॉमेडियन है. मेरे को पता है वो देख रहा है मैसेज मेरे, लेकिन वो आंसर नहीं करेगा.
नहीं वो भाई बहुत बड़ा इंसान है भाई, I don't स्टैंड अप want to कॉमेडियन। bring him. I don't want to bring. भाई मेरे दोस्तों ने स्पैम करना शुरू कर दिया है स्नेज रोस्ट, हाँ भाई करो, क्योंकि मैंने स्नेक की कंटिन्यूअसली शक्ल अजीब है भाई बहुत, ऐसा किसी को पता ना चले ऐसा। स्नेक का ईगो बहुत बड़ा है और उसका दिल बहुत छोटा। स्नेक का दिल बहुत बड़ा है ब्रो। ब्रो हैव यू सीन हिज हेल्थ, द दो कोडेलिकेट चीजें सर्व? बड़ी है, एक चीज तो छोटी है मेरे। स्ने What are we talking about, Snake? ब्रेन, I'm talking about Brain, brain. I see. स्ने गालियां बहुत देता है यार, वो प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्यूशन लाओ भाई, चैट मतलब सजेस्टिव वेज Solution के लाओ। गाली कैसे बोलना बंद करे। Isn't that what makes a चैट Rajkot में कोई बोल रहा है मिनिएचर। miniature human? छोटा बच्चा। भाई राजकोट मेरे को वो कह रहा था स्नेक को NGL कॉम्प्लीमेंट्स भी कैसे मिलती है पता है उसके, NGL नॉट एनजीएल में कैसे बोलता है छोटे से कि cute यू आर से। सो छोटू सा क्यूट स्नेक। I would love स्मार्ट to be क्यूट, a sugar mom. ऐसा लास्ट में ना कवर किया उसने, बट स्मार्ट क्यूट। मैं कहा क्या है ये। ये ना मेरा दोस्त है, इससे हाँ पर्सनल में बहुत रोस्ट हुआ है, बाहर लाना है अब सबके सामने। करो ना, मैं क्या मना बोल रहा हूँ, तुमसे हो नहीं रहा तो मैं ये भी क्या मूल करूं? चंदानी है, ये भी मूल चंदानी है। स्नेक एक क्वेश्चन। हाँ बता। ये जो आईएलएनयू की बड़ी ट्रॉफी पड़ी है, ठीक है, पीछे, हाँ उस तक हाथ पहुंचता है जरा? किसका किसका क्या बोला? भाई हाथ पहुंचता है तेरा हाथ उस तक हाथ उतनी पहुंचता है? नहीं ऊपर। भाई, बट ट्रॉफी है तो सही। ओ डैम। अरे देव तेरे पास कितने बेस्ट डे बता दियो तो एक बार स्ट्रीम को। You know, I have it, like, come on, man. हाईकॉम मास्टर देव चौहान। Sorry, yes. अरे actually the problem is with the guys I hang out with, you know. HLC में हम लोग साथ में हैं, सबको हाईकॉम मिला ना। तेरे को भी, मेरे को भी, इसने को भी। I mean, that's not the अटक only गया भाई। reason you get Highcom. अच्छा I know, just kidding. I am also kidding, but it was a underrated. ठीक है चलो। हाँ, भाई इसने आर्ग्यू फेस्ट की डिबेट्स कैसी लगी बता दे तो एक बार, टर्निंग yes. पॉइंट आर्ग्यू फेस्ट। Debates. I feel ये वाला आर्ग्यू फेस्ट could have been better in terms of topic. I genuinely मैंने नहीं ये हाँ argument बोला। 100 स्पेशली द फाइनल्स। सो सी हम लोग तो वी आर द मेंबर्स ऑफ टीपीआई बट वी वर नॉट अलाउड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज आई वाज नॉट, मी एंड प्रद्युमन वी वर नॉट अलाउड विद इन द प्रेमिसेस बिकॉज हम लोग टीम में थे और वो लोग टॉपिक अलग से ग्रुप डिसाइड कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हु, तो हमें बताया नहीं गया था बट एक्चुअली आई I was मेट in देव। that circle. अच्छा I don't know what you were deciding. अच्छा सो आई डोंट नो दैट बट आई मेट देव, मिला था उसको टू जस्ट प्रैक्टिस के भाई जस्ट राइट 2 days बिफोर द फाइनल्स आई मेट हिम और आई वाज सेइंग कि क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट, एंड वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च कि क्या टॉपिक हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते एंड व्हेन आई वेंट देयर द टॉपिक्स वर वेरी डिफरेंट। मतलब मेरा टॉपिक्स था कि काउंसलर ऐड होना चाहिए क्या क्या पेरेंट्स के साथ, स्नेक्स क्रिकेट क्रिकेट का स्पेलिंग गलत लिखा है भाई। वही इसलिए मैं डाल रहा हूँ। देखो इस आदमी को, तो उसको पता है कि क्रिकेट में अच्छा खेलता हूँ, दैट इज समबडी व्हेनेवर दे से दैट क्रिकेट इज भाई बॉक्स क्रिकेट में तो सब हीरो बन सकते हैं, आई हेट इट। बॉक्स क्रिकेट में सब हीरो बनते हैं भाई, क्या विराट कोहली बन this जाएगा। guy this You know, guy I have one question only to roasted all of you box cricket fans. नहीं मैं Why? नहीं बॉक्स क्रिकेट फैन, आई हेट बॉक्स क्रिकेट। Whoever it is. बता ना The question is why play cricket in such a small confined space when you can have, you know, Yeah, see you know, exactly. No, the thing is it is about efficiency. देखो होता क्या है, आप जब रियल क्रिकेट खेलते हो ना 90 ओवर्स धूप में जब खेलते हो ना, तब फील्डिंग करने में आंसू निकल जाते हैं, बहुत खराब हालत होती है। फील्डिंग करते हुए ऐसा रोना आता है कि नहीं करनी फील्डिंग भाई, इतनी आलस आती है। और मैं तो बहुत खराब फील्डर था, मैं तो बोल रहा हूँ उस टीम पे, So मेरी here, फील्डिंग नहीं थी where अच्छी। I am right now, I have space for ground at least. So I play cricket on ground here. In simple terms, हमें आराम से एक अच्छी पिच मिल जाती है, अच्छी जगह मिल जाती है, तो इसलिए हम खेलते हैं। तो क्या सीजन से खेलते हो क्या? आई थिंक जगह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती प्रॉब्लम है मतलब है। है। Whenever नहीं मतलब ग्राउंड्स काफी सारे हैं, आई बी ऑनेस्ट ग्राउंड्स तो काफी सारे, बट पिच की क्वालिटी, एक तो टर्फ की जो पिच होती है ना, सीजन बॉल से खेलते हो तो टर्फ की it's simpler इट इज than डिस्गस्टिंगली fighting for a बैड pitch. ब्रो। इंटर स्कूल में टर्फ पे खिलाते हैं सीजन बॉल के साथ, इट इज डिस्गस्टिंगली बैड। इफ यू आर अ फास्ट बॉलर, अब भूल जाओ क्रिकेट में आगे बढ़ना।
in Ahmedabad, inter school if you're playing. Yeah. The pitch is so disgusting, bro. बॉल ऐसे रगड़ के जाता It's है, not just Ahmedabad. बाउंस ही नहीं होता. गुजरात में प्रॉब्लम है भाई, गुजरात में प्रॉब्लम है, पिचेस अच्छी नहीं होती उतनी, बाउंस नहीं होता, पेस नहीं होता. It's a Importance very of good different pitch. Say, for example, in Saurashtra, if you see, most of the spinners have been more successful, हाँ वही, right? especially finger spinners. हाँ, so that is something that is observable. क्योंकि इनकी यहाँ की pitch ही ऐसी है कि spin सबसे ज़्यादा होता है. That is why whenever tour happens in Gujarat, say, for example, people bring more spinners in their team. हाँ, हमारे में पता था कैसा है, तुम अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो ना तो यू विल गेट द फर्स्ट 4-5 ओवर्स ओपनिंग वाली, उसके अलावा तुम्हें बॉलिंग देगा ही नहीं. एंड देन फॉर द होल 90 ओवर्स यू हैव टू फील्ड आउट, एंड मे बी डेथ ओवर्स में मे बी इफ द स्पिनर्स आर नॉट बॉलिंग वेल, व्हिच हैपेंड रेयरली. मेरी हीरामणी टीम थी, सो आवर टीम वाज बेसिकली द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स. और मैं एक मैच Wish खेला they था could be a good हार्डली. school. हाँ, Wish they could be a good school. a disgusting school, man. Disgusting school, bro. ये YouTube पे रिकॉर्ड पे होना चाहिए. The school was absolutely disgusting. I went to admission in मेरा अच्छा हुआ नहीं आया भाई, जिंदगी बच गई तेरी. तो I was with my parents as soon as we entered हाँ. Germany. ठीक है, हाँ. हमको ऐसा लगा कि क्या क्या है ये, क्या सीन है. हाँ. फिर हमने बस से उतरते हुए देखा लोगों को. भाई मेरे पापा ने भाई मेरे को क्या बोला. मत बोलना भाई, स्ट्रीम पे मत बोलना. फिर SGVP में चले गए. अच्छा हुआ. तू SGVP का है? नहीं भाई, SGVP में गए लेकिन उधर का बाथरूम देख के वापस. नहीं भाई, SGVP में बॉयज स्कूल है भाई, प्रॉपर मतलब. हाँ, I will इसलिए नहीं गया. best school that is like not in Ahmedabad but that is in Mehsana. Okay. हाँ. तो Mehsana water park famous one, उसके सामने एक तपोवन इंटरनेशनल. तपोवन. तो like मैंने ना भाई अपने टाइम पे 15-20 स्कूलें देखी थी सिर्फ अहमदाबाद, and then after I reached there तपोवन इंटरनेशनल करके, भाई it is my life regret that I didn't study there. It's my life regret. so what was there? What did you like about it? की चीजें सारी अलग थी इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा, बट लाइक जेन्युइनली बेस्ट स्कूल. मेरा ये हर जिंदगी का हर बार का रिग्रेट रह गया. वैसे अपने हिसाब से ही चलाई मैंने जिंदगी, लेकिन वो एक ऐसी चीज थी जो मेरे को अब से रिग्रेट. क्या पसंद आ गया था उस स्कूल के बारे में? ऐसा तो क्या पसंद आ गया था स्नेह भाई? वेरी डिफरेंट. लाइक ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड स्कूल, गुड पीपल. कैंपस अच्छा था, गुड पीपल अच्छा, गुड मतलब क्लासमेट्स की टीचर्स, फैकल्टी, बोथ आई मीन बोथ फैकल्टी भी. ठीक है. अच्छा ओ सॉरी, अरे सॉरी भाई, सॉरी. अभी ऐसा ट्राई कर रहे कि थोड़ा रोस्ट कर सके स्नेह भाई. रोस्ट एंड फिलॉसफी. पता है ये ना ये चीज, चलो ये चैट बड़ी अटेंशन ला रही है उनको, और तो चैट को लग रहा है कि मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ. ये लोग बोल रहे हैं बेस्ट स्कूल उत्कर्ष. तो हमारी ना उत्कर्ष करके एक स्कूल, उत्कर्ष. या अच्छा. इट वाज इन राजकोट. हाँ. School traumatized me. That is the हाँ. reason that I've left studies. Oh damn. I love studying. Like I love studying a subject. I love study as a whole. But I left education system because of that school. You know, because like हमको कैसा होता है पता है, 7 बजे जाना है तुमको, 2 बजे तुम निकलोगे उधर से, फिर तुमको 4 बजे वापस जाना है, 8 बजे निकलो. Oh. And in between that you just go for lunch and shit. Test every alternate day test. ठीक है, फिर कंटिन्यू स्टडिंग, कंटिन्यूस रगड़ा. 11-12 साइंस, इट वाज साइंस लिया. ओह. इवन टुडे व्हेनेवर आई वेक अप आई हैव दैट ट्रॉमा कि भाई लेट हो गया. Even when today I go to Rajkot and pass that street, I always have that fear कि भाई 5 बज गए, मेरे को पहुंचना है स्कूल. That amount of trauma that school has given. Yeah, no, सेम भाई, सेम विथ हीरामणी, आई टेल यू. I बहुत ही अजीब स्कूल थी, बहुत अजीब स्कूल थी यार. मतलब पूरा मतलब सब कुछ अजीब था उस स्कूल में, पूरा अजीब ही स्कूल थी. हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट अजीब What do था. you think education system should change? एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग. no, I don't think there needs to be an application-based learning. It's also one form of think good learning, right? एप्लीकेशन में तुम लोग क्या करते हो कि भाई इसीलिए पढ़ना है क्योंकि तुम कहीं जाके अप्लाई कर सको, नॉट बिकॉज इट्स फन, नॉट बिकॉज इट जस्ट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, बट बिकॉज यू वांट टू अप्लाई इट समवेयर. दैट्स सो शिटी. नहीं मतलब सी आई थिंक व्हाट देव इज सेइंग इज वेरी आइडियल, बट काफी सारे लोग दे पिक अ स्ट्रीम because see a lot of people cannot figure out what they want to do with life. A lot of people cannot figure out that this is my passion, this is what I'm good at, this is what I enjoy.
So a lot of people just go into conventional streams or streams where they can earn the most money or most profit. What about those students? They You know, I want have their education to be applicable, but two. you make it more entertaining. And the side effect of making education, the sole focus of making education more entertaining or more fun, would result in its efficiency. Of course, it would. But then you would look into the purpose of education. What is the purpose of education? Is it to uplift the human mind or is it to make good workers? Good workers, 100%. I think, As 100%. of now, it is. But what is the As of general now. purpose of it? yes, Not yes. system. General purpose is to uplift the human mind, right? We have to 100%, yes. somewhere down the line we have अचानक से to. आयुष डिक्टेटर मोड में चला गया like workers मेरे लिए काम करेंगे Capitalism. See, are you aware of Maslow's hierarchy of needs? Yes. Right. Physiological needs. Physiological needs, Society. that societal needs, capitalism needs. which we हाँ. also generally like go ahead with, uh, then there तो individualism is very less according to Where? theory in Where? capitalism. Of course, it's very less. Individualism is less. Everyone Of course, is yes. just There's an a difference eyeball between or just a liberalism and customer. capitalism, no there. There is. So what you are aspiring as an education system is something that is liberalism. And whenever there is capitalist education system, it is something very similar to what it is going on right. Hmm. Because So- the capitalists want people to work for him Work and for him. not the other way. The liberals is where Those are the side. See, I Over-liberalism is also a threat, right? Where what we're What? saying, yeah. listen, It's over-liberalism is coming also to a also. threat. In the Western world, we see people pursuing degrees which have no use at all, and they end up. this is a really Even good point. schools, even Yeah. schools. You This look is at a they are really good teaching how point. to plant trees, Huh. LGBTQ and all of the stuff. Huh. No, like see, knowing yourself and all that bullshit. I think see there is nothing wrong with giving an comprehensive education on what is gender orientation or what is sexuality. There is nothing wrong with it. I think there should be a certain age limit to it. So you cannot go and teach or talk about those things to kids studying in kindergarten, 5-year-old kids. They You are cannot not- they are not do doing that to second graders, and that is a problem that is especially happening in Northern American regions, in US and Canada, No, it's very where different than what we see. But children the are being difference is also- exposed to देख things रहे हो that they ना, should मेरा not मुंह be से बाहर exposed. आ गया। एक देख रहे हो ना भाई ये स्टोइसिज्म वाले लोगों का यही होता है क्या? LGBTQ की बात करते हैं तो भाई दिस इज रॉन्ग ये नहीं होना चाहिए But why are we focusing solely on NCPP? Right? There are other things people are learning which have no use at all. They are learning like say Hispanic history or Afro American history, and No, that's no. all that they're pursuing. See, Instead of pursuing mathematics, it is about इसको understanding देखो the. भाई, ये It ना is मेरी स्ट्रीम बिगाड़ने के लिए आया है बोल रहा है कौन? DMs ने he does registration for भाई what? नहीं Of what? ये Registration of what? आने के लिए स्ट्रीम पे आने अच्छा के लिए अच्छा Oh. हाँ. अरे भाई there's मैंने पता है वो स्नेह को पूछते मोटा हैं, पैसा what is- दिया. मेरे को ना मैसेज आया था व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन योर पैनल मोटा पैसा पैसा नहीं, दो मैंने भाई पैसा क्या लिखा और है? एवरीथिंग का प्रमोशन भाई. मैंने क्या लिख के बताया भेजा पता है मैं का यू नीड टू बी माय फ्रेंड टू बी आप कर लो आप कर लो तुम कैसे मेरे फ्रेंड बनोगे देख लो भाई फ्रेंडशिप. क्योंकि भाई उसके नेक्स्ट मैसेज से मैं रिप्लाई देने वाला हूँ नहीं उनको क्योंकि वो मेरे जनरल कैटेगरी में चले गए तो फिर उनका चैट क्या आ रहा है मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं एंड दे जस्ट कीप गोइंग Hey, do you think that coming on your stream or requires a certain level of merit, or is it purely out of relations? No, I mean you can be on my stream. How can it require? अरे यार वो वाहियात जोक You वाहियात just walked जोक into it, bro. बहुत गंदा जोक है. You walked into it. अरे आयुष actually जब तेरा नया नंबर आया ना I अच्छा, saved it as अच्छा. हाँ हो गया था पहले and changed it. I saved it as Ayush Rao RGFest 5.0 winner. अरे यार क्या यार ये सब मत बोला करो स्ट्रीम पे तुम लोग. वो भी तेरी तरह फाइनल के बाद नहीं पहुंचेगा देख लेना Okay. अरे by the way, there's this debate competition, British parliamentary debate competition at GLS. Yes, I know. But the I talked to Ansh about it. Ansh के साथ बात हुई. You have to form a team. So हाँ, वो we are going अच्छा you have a team already. yeah we will go I'm saying that अच्छा of course. But वहाँ पे वो प्रेजेंट एक तो वो प्रेजेंटेशन वाला इन्वेस्टमेंट वाला है. ग्रुप डिस्कशन में you have to discuss case studies. हाँ doesn't matter लाला वो देखते हैं फिर ऑफ स्ट्रीम बात नहीं तो डिबेट में तो मतलब ठीक हो तो जाना ही है 20,000 दे रहे तो हाँ अच्छा खासा इसमें नहीं है. डैम चलो चलो. देख
लास्ट वो प्रेजेंटेशन के लास्ट पीडीएफ में तो पहुंच तू। नहीं भाई उतना नहीं पढ़ता मैं। मेरे को अंश मैसेज कर रहा है, बोल रहा है सर ये कंपटीशन है, उसको पता, बोला कैश प्राइज भी है, आप आ जाना। मैं कहा ठीक कौन कर रहा है मैसेज? है। अंश। Hunch. अंश। बोला अच्छा कैश प्राइज भी है, बस वो ध्यान में रखना। मैं कहा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। भाई कैपिटलिज्म एट इट्स पीक, पैसा ही हर एक चीज में। भाई स्ट्रीम का I- क्राइटेरिया था ना, पैसा दो और प्रमोशन करो और कुछ नहीं, हाँ सिंपल, बस ये और कुछ नहीं होता। बट यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज फॉर मनी, for that A required. person who seeks spirituality, a person who seeks philosophy, the higher meaning of human life, who studies it, who at least understands it, that is a very shallow perspective I'm towards life, my understanding, friend. that's why I'm coming to that shallow perspective, sir. See, I'll tell you, I'll change that perspective whenever I have money, No. in simple sense. See, being ambitious is different. You know, Ambition trying is to different. provide Okay. for your loved ones or trying to have goals and earning money is attaining a better lifestyle. Those things are different. But saying Okay, that money whenever you matters, want to money is learn, all that matters. whenever you That want to is learn very wrong. philosophy, whenever you want to learn philosophy, who do you go to? Or sorry, spirituality, who do you go to? Chat, you also answer this question. Whenever you want to learn spirituality, who do you go to? Spirituality is something that is embodied This guy. within yourself. Yes, I I just go to want this to guy. name, I just want to answer. Okay. So This guy, the Krishna. common Okay. common answers are going to be through a book, through religious or sacred texts, through You can also ebooks, name person. through I'm YouTube asking videos, person. I'm asking person. or even let's say a spiritual guru. You find a mentor, you find anyone, right? What I think my I'm not asking you कि perception तू or perspective spirituality of कहाँ से लेता philosophy. है, मैं पूछ रहा हाँ हूँ वही किस बोल से रहा हूँ, लेता है. खत्म करने दे, वापिस रील बनेगा, ऐसा बोलने नहीं दे रहा है, म्यूट कर दूंगा, भाड़ में गया वकफ. Mute कर दूंगा मैं. हाँ तेरे को इसलिए तो पूरा स्ट्रीम देना पड़ा मेरे को. हाँ बता. हाँ. So I think spirituality is something that can be embodied from the within. It is something that can come to you naturally. So you won't even realize you're being spiritual. You won't even realize that you're, let's say, meditating or thinking or in the process of mindfulness. You won't even realize it, but you are still in that stage. I think spirituality is something that cannot be defined. It is very vague, but it can, occur to you by yourself from the within. Still I'm asking for that I question. I I I तू I have a बोल, contradiction. इंसान का नाम बोल. देख हाँ इसने क्या कृष्ण बोला, कॉन्ट्राडिक्शन? तो तू किसको बोलेगा? हाँ व्हाट इज इसका योर तू तो कॉन्ट्राडिक्शन? डेफिनेशन पे चलो मत जा. नहीं, क्वेश्चन. आपके क्वेश्चन हम इग्नोर कर रहे हैं आज. It is आप not. बताओ. It is not Yes, something that आज is रोस्ट कर रहे debatable. हैं उसको. आज वी हैव टेकन ओवर द It's स्ट्रीम. not debatable. ये मेरी स्ट्रीम है. बताओ. तेरी stream है ना? Voice चल taken बंद over कर the आईडी का stream. stream. बंद करके. म्यूट कर देंगे तुझे. बट हाँ ये बता ना, ये देख, मेरा ये मानना है कि इवन श्री कृष्ण, लाइक व्हाटएवर, जय शेट्टी, ओशो, जय शेट्टी. Pierre Biceps, say for example, any person who teaches spirituality, they need to be somewhere to teach that. They need to be somewhere to practice that. And I would rather not preach it, I would rather not do that till I am there. No. I have gone through all of the spirituality process, I have gone through all of this stuff, but I have realized that if I want to practice spirituality, I need to at least have a land where I can sit No. and practice it. No. See the history, I'm culture not of talking spirit. philosophical, No. I'm talking very The practically right now. history. No, See the no. history and the whole culture of religion or spirituality begs to differ completely with you, my Yeah, friend. it's very different. See Osho. If you talk about Osho, That if is you why look I'm at his saying, life, in if you look at his 21st life, century, you need to have a room to practice spirituality. So what No. you are saying is that in If order you- to let me complete. हाँ. Let me clarify that thing. So Yes, Sneh, yes. what you are saying is that in order to practice spirituality, in order to understand the secrets of universe, and in order to, let's say, in the basic sense, understand ourselves better, we need to abandon things around us and go into a state of I'm hyper not saying focus. abandoning. I am saying, see, my perspective is very different. I am saying that it's okay for me to practice spirituality. Okay, it's okay for me to preach spirituality. But I also need to sort the parts. भाई ओम मत करना फोन भाई, अभी स्ट्रीम पे हूँ, क्यों फोन कर रहा है? चैट में बैठा है तो भी तू फोन कर, बैठ ना वैसा. कौन कर रहा है फोन? ओम है भाई मेरा दोस्त. अच्छा, भूल But चल रहा in है. general वो sense, चलना नहीं आ. what I am saying is कि I am right now sitting here, मेरा flow ही टूट गया. I'm practicing spirituality, but I should also perform acts where I can earn for my family, where I can
fulfill my responsibilities. Okay. Yeah, I So think what I you were That's saying, what I want. no, spirituality. To say is very much In right now. practical sense, Bhai, Spirituality he is is, very in see, how you we see. live. can go for No, spirituality. no. I think That it is my is, perspective. Sneh is correct, but he has misinterpreted the idea of Exactly, spirituality. because that No, was see, 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 the see, idea this of is the thing. interpretation of spirituality was We also religion think, only. included, I'm not right? There questioning has we, been. spirituality. we I'm think, questioning the we think, prioritization. no. It is, see, we think that spirituality is something that comes when you are willing to sacrifice materialism overall. You are willing to sacrifice worldly I am positions. very See, See, materialistic. that is the no, view of see, Hindu. okay. Let me finish, Dev. Let me finish. Okay, so that is what you're saying. That if a person has to prioritize, see, I want to grow in my career. I want to earn. I cannot set aside away from all of those materialistic pleasures and be spiritual. And that is where you misinterpreted the thing. Here, if you've read Osho, you would understand this. That Osho was a huge believer of being spiritual, but at the same time living in the sansaric world. Hmm. बोलते ना Exactly, अपना that is what संसार my point is. संसार में रहो. Simple sense. So if you understand spirituality is not about I disconnecting am from the not outer against world. spirituality, sir. I am not It against is spirituality. I am it just is saying. about understanding yourself. Exactly. I am just saying. I agree to this point. That is what I'm saying. We don't have different perspective on this because we come from the same source, Hmm. Hmm. right? In Hmm. studying all of this source, I have realized it is all about prioritization. It is good to No, practice spirituality. It is good to do all of that stuff, but the world is you necessary to be. The and world is see, necessary. no. I think See, the if you if purpose. No, no, you you are if pointing you to I, talk about same. priorities, No, no, no. to be if honest, the if you purpose talk of about खुद ही priorities, बोल रहा है if you मेरे को talk बहुत about जरूरी if है you talk about जल्दी बता priorities, particularly if you talk about priorities, you have this very one-dimensional perspective of things where you're saying that if I want to earn money, spirituality, I'm not saying that I completely abandon spirituality, but spirituality not will not be my first priority. This particular thing, earning money, will be my first priority. What no, I am saying is that both of those things can be your primary priority. What is Spirituality your is age? flexible, so no matter what your goal is with life, you want to earn money, you want What is to your age? attain more knowledge, spirituality can bend with it. It can literally mend with What is it. your age? What? What is your age? 25. What according to you is money problem? Huh? And again, this is an interesting I question. am just asking you that question. What This according to you is money problem? this is an interesting question. According to me, I have experienced to a certain extent Tangi. Exactly. So I when don't you want to have share the my money personal problem, experiences. I you don't want to share my prioritize personal yourself. experiences, but I would say I have personally seen people. I have seen people. My relatives have seen who are going through financial and career crisis in their life, and it was because of spirituality that they were able to bounce back. What is their That is what age? I'm saying. I think both of you are saying the same What thing. is I their think. age? एक second. Dev, what is their age? What is whose age? My age. Your relatives who went through the They're in process. their 40s right now. They're in their 40s. My 40s. And when they experienced it, they were not in their 40s. When they experienced it, they were in their 20s. उसको मिड They लाइफ just क्राइसिस graduated बोलते out of हैं the भाई. college. तो अगर 20s में उन्होंने पैसे को प्रायोरिटी दी होती ना तो 40 पे बैठ के पैसे की प्रॉब्लम नहीं आती. अबे 40 पे आई नहीं थी भाई, समझ सुन. 20 पे प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने मेरे को टाइम स्पिरिचुअलिटी के देता वजह भाई. से आगे मेरे को बढ़े. पता है मेरा रास्ता सही है, ठीक है. नहीं, मैं नहीं बोल रहा तेरा रास्ता गलत है. मैं बोल रहा हूँ तेरी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है. मैं तू बड़ा हो जा फिर तेरे को समझ आ जाएगा. ठीक है, 25 पे तू जो बोल रहा है ना, क्लेम कर रहा है ना एज, उस एज पे आके तू सेम चीज पे अग्री होगा. अपने आप शिफ्ट हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग अग्री. लेट्स सी. लेट्स आई एम सी. नॉट सेइंग अपने आप तेरा टाइम शिफ्ट हो जाएगा. तू अभी शायद मान ले 4 घंटे के लिए बैठ रहा है ना मेडिटेशन में, अचानक से वो 1 घंटा हो जाएगा. वो तेरे को एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा. भाई वही चीज है ना, मेडिटेशन के लिए बैठना नहीं पड़ता. हाँ, तू मेडिटेशन कर इज लेना. नॉट तू समथिंग अभी यू कर ले मेडिटेशन. सेट असाइड. कर सकता Also, हूँ, अभी I भी कर सकता हूँ. टेक्निकलिटी पे आ जाता है भाई. अभी भी I कर सकता हूँ मेडिटेशन करना अगेंस्ट हो तो. स्पिरिचुअलिटी. आई एम नॉट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी. And आई I एम am सेइंग not arguing against प्रायोरिटी. earning money. I am arguing against your flawed idea. ये हर बार डिबेट करने आता है. Ayush, there's this wonderful thing that Osho said because you believe in him. I That don't you, believe in Osho. listen, hear me out, right? That you can हाँ. meditate by dancing. He said that, and Yes. the Yes. purpose of him saying is that meditation is not something that you do while sitting under a tree thinking about something for 4 hours. It's something that you do as a part of your basic living. Yeah, You क्या live. मैंने ही that's बुक दी what थी तुझको ये? this मुझे क्या No, ज्ञान दे you रहा है? don't give me that is that my book. So work. I I don't love remember the doing book. it. I get peace out of it. That is my meditation. True. हाँ. Right? It is that simple. I understand that. But it is also important to, like, say for example, I love making videos. Is a meditation. Yes. But if my videos don't work, then those videos should not be made.
That is my point. So it is through meditation Those that you videos can make should. better The videos. mix of both is what going to make And you. that is exactly what I was saying too. Sir, it's about prioritization. Both different है. It is not same as what you were saying. It is not at Yeah. all same as what No, you were saying. आप बोल रहे हो कि प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. आई एम सेइंग कि प्रायोरिटी आप एक चीज को दे सकते हो, बट एट द सेम टाइम मेडिटेशन कैन बी योर पीक प्रायोरिटी बिकॉज इट कैन मेंड विद थिंग्स. So there should be balance, right? That's what you're saying. And that is exactly what मुझे he's ये saying. लगता है there is every person's life there should be a phase कि जहाँ पे वो relentlessly obsessively काम करता है. फिर आता है Without वो वाला focusing on स्टेज it. कि जहाँ पे अरे उसके भाई. काम के साथ साथ उसकी हेल्थ भी साथ में आ रही है. फिर आता है मैं- वो स्टेज जहाँ पे उसके काम के साथ उसकी हेल्थ और उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों साथ. ओके. That is how मेडिटेशन अपन मेडिटेशन बोलते हैं. मेडिटेशन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ध्यान. हिंदी में बोलते हैं, चलो ध्यान. Without focus, can you be obsessed over something? Especially in times where problems like ADHD have grown so much. I think it is due to the lack of connecting. Isn't the fact that he's prioritizing does for meditation mean focus? Not exactly. Exactly. Not Focus is a part of Dhyan means meditation. Focus. Dhyan means meditation. Exactly. So No. it is English language flow. It is not Hindi. Like it is Hindi. हिंदी में ध्यान is focus. संस्कृत में ध्यान is not focus. ध्यान has bigger inferences. Exactly. What is meditation in Hindi? You only ध्यान. said it is ध्यान. ध्यान, हाँ. तो क्या So, क्या बोलता है? तो क्या? तो ध्यान शब्द जो है उसके दो मीनिंग हो जाते हैं मेडिटेशन और फोकस जो एक दूसरे से इक्वल नहीं है. नहीं. Focus is a part of meditation. एग्जैक्टली. सो फोकस किसी एक चीज पे करो वो तुम्हारे लिए मेडिटेशन हो सकता है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेडिटेशन कर रहे हो. समझ रहे हो? नहीं. ठीक है छोड़ मेरे को समझाना ही नहीं. मुझे समझना भी नहीं है. तेरी मेरे को समझना है, हो समझा. जाएगा ना तो हो जाएगा. ठीक है. I prioritize like I love this guy man. ये ना मतलब हर एक चीज में ना सीखने के लिए देखता है. उसका पर्सनल ओपिनियन भाड़ में गया. He will be like okay. वो MUN में ना चालू कमेटी में ऐसा बोलता है. वो वंडर करेगा ये बंदा क्या बोल रहा है. तो ना PY में पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सीखने के लिए MUN के बीच में. इसलिए बेस्ट डेल नहीं जीतना. भाई हाँ बताओ मेरे को. सीखने के लिए करते हैं. मजाक. No, but honest to God, भाई Dave is हाँ, it's curious, very curious. So that is where the stream is. Although I want Dev to ask more questions, but this stream was to tell him that you have this talent, utilize it somewhere. तेरे पास ठीक है. ये चीज. Bro, थैनोस बाबा कौन है बे? Thanos बाबा बहुत ही बढ़िया नाम रखा है थैनोस बाबा. उसका PFP भी बहुत बढ़िया है. Arey, say, I had this question. You know, because you made a series of videos on Indian religion and Indian philosophy, etc. Do you think that the reason Indian philosophy has this concept of gods and this reliance on Bhagavad Gita? Do you think that the reason that all of that is there is because at a particular point in history, Islam started to take over India, and in response to Islam, they started strengthening their philosophies and making them more and more mainstream and brute force. That's it. Okay. Because okay, let me give you some context before you answer that, because I know you can answer it very well. Because before Islam entered India, we had this Vedic philosophy, right? And Vedic philosophy had basically 6 schools, and all of those schools were considered they were concerned with just basic understanding of the universe and rituals and etc. Right? And in every single school there was this thing called Upanishads, and Upanishads were just speculative in nature, and they used to be the primary philosophy. इसमें वो लोग they used to just think कि भाई universe कैसा है and ये rituals करने से हमें क्या मिल रहा है. Okay, their basic need was to satisfy their curiosity. That was all the Vedic rituals were for. Now, when Islam took over, they started creating this concept of gods. They started creating the concept of Vishnu, Shiva, Bhagavad Gita, that there is one supreme being. And I would say that the concept of one supreme being was borrowed from Islam in itself. Because Abrahamic religion में there is a supreme God. On the other hand, in original Hindu text there is no mention of one supreme God before Islam. So what do you think about that? Okay, I'll answer that in like parts. ठीक है. सबसे पहले तो I don't think that whatever God or godification of religion happened because of Abrahamic religion. I feel Indian philosophical realm was very much unaware of what is going on in Saudi Arabia.
right, at that time also, and that is peculiar reason why like world is not aware about Indian philosophy, because the formation of Indian philosophy as well as debates of Indian philosophy, the word Bhagwan did come up, the characters were already established, but the stories were not drafted. Yes, those were drafted in Puranas. Yes, exactly. So that there is a reason that it is separate from Vedas as well as Upanishad, as well as it is Hmm. known as the other texts that were written after, like it is not a post-Vedic text and all of that. Hmm. Smritis, right? So Smritis probably might have influence of the world, but I don't think the core philosophy or the core Hinduism as a whole or godification of Hinduism was because of that I think Islamic. I Abraham think religion. the gurus, I जस्ट think अ the सेकेंड मेरे Vedas. को आने दे उस पे मैं आता हूँ, ठीक है, हाँ. लेकिन उसके अंदर क्या होता है पता है, देर इज अ डिस्कनेक्ट, देर इज अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन ब्रह्मा विष्णु महेश and what happened after him, what all gods came after him. Hmm. The connection we see that they are avatars and all of that, and there were Hmm. stories where they interact with each other and all, but there is a हाँ. clear distinction, right? That looks like it was developed after that and the links were joined. Speculation, of course, might probably not be, because I personally, my belief is that whatever gods we listen to as of now, they were ancestors, Hmm. they were actual humans whose stories were converted or godified through the passage of time, Hmm. and that stories look like us now, that they were god. Like there must be a Exactly. charming intelligent philosopher from Dwarka who went through a lot in his childhood, but then after he started and made a realm of its own through his philosophy. And now that leader of the tribe, we know him as Krishna. That There could must be a be, theory. yeah, there I- must be a yes. king who faced, whose wife got kidnapped, and then after the story was drafted, said that it looked like a god to us. It So, is. It so could do be you a think? Do theory. you think? Right. Like, say, Wait. It for is a example, theory. Osho is known as Osho Bhagwan, as even in Huh. just 10, 20, or how many years? Like, say, for Okay. example, Okay. in just 3 decades, 3 decades. 3 4 decades. right? The हाँ. Osho is known as Osho Bhagwan. That Bhagwanification is very common in India. So probably that is my hypothesis of godification as a whole. See, That those who are tribe leaders converted into. But I. Abrahamification came where Buddhism, Sikhism, and all of that came up. Yes. Those was particularly in, like, in oppose of all the principles which led to like, uh, क्या बोले, फैला, उसकी वजह से ही फैला है रिलीजन, टू बी वेरी Hmm. Hmm. ऑनेस्ट. जहाँ पे बुद्ध ने जब बोला कि वेदास गलत है, तो Right. कंट्रोवर्सी हो जाती है, और Hmm. कंट्रोवर्सी से ही चीजें चलती है. So God, of course, is the meme which gives philosophy of religion out there, but it is Buddha who acted as a meme at that particular time, where Yes. he did a controversy so that religion could reach a lot. The simplification of religion by converting it to eightfold parts is very Hmm. much required for transferring it, just like 10 testaments were. Hmm. So there were actually 11 testaments of Buddha, but it was decreased to 8 Eight. to specifically make it viral, to be very honest. Just like हम वीडियोस के साथ करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है कहने को, जैसे मेरे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत सारी थी कहने को, लेकिन मैं 8 चूज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सबसे अच्छी थी जो लोगों को सुनने में मजा आएगा, Hmm. और वो मैंने डाल दी. So that is something that happens in the world. So probably not Hinduism, but whatever happened after that, that might be influential. But I'm pretty sure that they were irrelevant of what is happening in a kingdom, because I believe Islam was a kingdom and the religion of a kingdom which passed on because of the, like, them acquiring a lot of land. Yes. Religion, I think what we think that religion is accurate, religion is factual, and I think that is where we fail to understand religion. The uh, how do you interact with religion? You understand religion through stories. You understand religion through folklore, tales, Rituals. books, rituals. You inculcate it as a part of your lifestyle. Especially what the greater influence of Sanatan Dharma is, that it is a form of lifestyle. It is not a religion. A lot of people and a lot of gurus say that, right? Hmm. I think the problem arose when we thought that religion was supposed to be very literal and very factual. The gurus, the saints wrote it in a particular way. Why do you think the Mahabharata was written? Why do you think that epic was written or Bhagavad Gita was written? So that the idea of God,
so that the idea of this greater power existing could be materialized into the minds of common people. You know, it is Yeah, just something, characterization, this proper big characterization. idea of a creator, of a huge creator. Yeah. Like अपनी debate हुई थी इसने, so we agreed on one fact that there is a creator. Bhagwan, let we did agree on that. You said that. The I causation. literally have it on channel, right? And to wrap your mind around that big idea, especially amongst the huge populace, huge masses, it is very difficult. And that is why that materialization and that, as you call it, godification, Between that creator godification and was right. necessary so that people understand this idea There of a is a creator difference. existing. There is a difference between creator of a tribe and a creator of a universe. Hmm. Hmm. Supreme power is very different definition. I don't consider it because I don't need it. ठीक है, मेरा बहुत अलग व्यू है उसमें. मैं उसको इसलिए कंसिडर नहीं करता क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं होती. जहाँ जहाँ पे मुझे सीखने को मिलता है वहाँ वहाँ पे मैं चीज़ें लेता हूँ. सिंपल है. मुझे भगवद गीता से सीखने को मिलता है तो मैं उधर से लूँगा. Whether I believe in Krishna or not is a secondary thing. Hmm. What I understand is I can learn from Krishna. As simple as that. हर एक महाभारत का कैरेक्टर ऐसे फिट किया गया है कि तुम्हारी किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो. Exactly. Exactly. You can be at the place of Arjun, you can be at a place of Krishna also, you can be at a place of Karna also, you can be at a place of as simple as Dhritarashtra also. It is a metaphor. I see it as a Sneh, metaphor. your voice is not coming at all to the listeners. Yes. किसी को आवाज नहीं आ रहा है. Do something about it right now. कुछ करो. I wish. Why do you think we created the idea of the creator? I think it was to give hope. It was. The It was to give biggest hope. reason, no, it was to give hope. The biggest reason for religion existing is hope and faith, especially Abrahamic religions, इसका phone especially बज रहा Abrahamic है. religions. हाँ, क्या हुआ? I think I see Abrahamic religion is very similar to communism. अरे What? बाप रे. Because no, I'll tell you, no, it's not a bad word. I really respect communism as much as I respect Abrahamic religion. हाँ हाँ, बताओ Right? बताओ बताओ. I हाँ. personally feel it was a rebellion. It was a revolution in Renaissance that type. particular area, right? In that particular area, and it was drafted in a way that it looks like a revolution. It was a So. revolution to operation. Like say for example, if we could consider Judaism first, Hmm. okay, Hmm. Hmm. it was like a renaissance or a revolution against the Egyptian burden on them, Hmm. हाँ. right? Operation of Egyptian. It was similarly then Christianity came up because Jewish were doing the same, right? Then after say for example, after Christianity, Islam came up, that because of the Christianity and Jewish people doing the operation, as Hmm. well as a particular problem that was going in desert areas, that was king's problem and operation in the same area. So Abraham has gone through all of this. The connection of Abraham as well as religion is very different from the stories that we heard, क्योंकि जीसस और इब्राहिम कभी कनेक्ट नहीं होते, Hmm. लेकिन उनकी स्टोरीज कनेक्ट हो जाती. तो देयर आर टू लेग्स ऑफ लुकिंग एट इट. इधर यू कैन लुक इट एज एब्राहमिक रिलीजन और इधर यू कैन लुक देम एज इंडिविजुअल. You cannot look both of them Do at the you same do time. you see them as Abrahamic religions or Abrahamic philosophies? On depends on the context. देख अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको हाँ. इब्राहिम के रिलीजन से ही कंसिडर करूँ, हाँ. क्योंकि मेरे हिसाब से इब्राहिम ने लिख के उसको डाला. लेकिन अब हाँ. मान ले मैं जुडाइज्म के अंदर डेप्थ में जाना हूँ, लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जुडाइज्म के रिलेटेड है, तो Hmm. मैं जुडाइज्म की हिस्ट्री के हिसाब से जाऊँ. Now तो imagine मैं this. उसकी एडम और ईव की आइडियोलॉजी से ही निकलूंगा कि एडम और ईव से ही इसका रिलीजन शुरू हुआ. समझ रहे? Have you noticed that after the Renaissance, the Western philosophies which came out, they were not associated with any religions. On the other hand, they were actually opposing religions. For example, Nietzsche, consider Schopenhauer, consider. Exactly. See, every philosophy comes out as a rebellion or a opposition to something. But no. That's something false. We believe I mean, it was a Western idea that all philosophies are a rebellion to something. On the other hand, the Indian idea is that all philosophies are in relation with one another, and they are the cause of something. They are born out of something, and they are also the cause of something. It's like a special continuum. So I don't think that all philosophies are opposing something. They just appear to oppose something. On the other hand, they are very much independent, and they're very much contextual to whatever is happening in that era. संतुलन की बात है ना भाई, संतुलन की बात है. देख जहां जहां पे कैपिटलिज्म बढ़ता है वहां वहां पे कम्युनिज्म आता है. ठीक है, जहां जहां पे फेमिनिज्म बढ़ता है वहां वहां पे एलजीबीटी को आता है. Hmm. ठीक है, जहां जहां पे लिबरलिज्म बढ़ता है वहां वहां पे ही सोशलिज्म आता है.
in simple I terms. think no. I'll tell Yes. you why. Ayush, your face. I'll tell you why. Okay. There were oppression on female. Okay. Hmm. Led to birth of feminism. Ah. The idea worked. Idea of feminism worked in a particular way. Hmm. The people of the other gender feels that when you do a revolution like feminism, you get Hmm. rights. Hmm. So they do the same thing. Hmm. लिटरल पैटर्न है फेमिनिज्म का जो पैटर्न है वही इन लोगों नहीं का आई सो जो इट इज नॉट कम्युनिज्म इवन एन कैपिटलिज्म नेचुरल वाला था वार्निंग दैट इज व्हाट आई डिसएग्री टू हाँ फेमिनिज्म वाला कंप्लीटली एग्री टू कौन सा वाला इधर कम्युनिज्म कैपिटलिज्म वाला Do you सी think? wherever there is capitalism कैसे होता है पता है इन जनरल सेंस कैपिटलिज्म ऑफ कोर्स इज नॉट हाउ वी डिफाइन इट बिकॉज जनरली कैपिटलिज्म कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 100% कहीं पे अप्लाई नहीं होती जहां जहां पे कैपिटलिज्म आता है वहां वहां पे इलीट्स राज करते हैं इन सिंपल सेंस Of course. तो जहां जहां पे इलीट्स राज करते हैं तो इलीट्स को हटाने के लिए कम्युनिज्म आ जाता है अच्छा ओके Yes. इन दैट सेंस यस हां सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग तो जहां जहां पे कोई भी चीज पैदा होती है और उसका भाव बढ़ जाता है तो उसको अपोज करने के लिए एक चीज आ जाती है कि जो फट जाती है रेवोल्यूशन बन जाती है इंसानियत की आदत है रेवोल्यूशन का Yes. हर एक चीज पे रेवोल्यूशन का चेंज इज द ओनली हाँ कांस्टेंट अगर आयुष और देव एक बात पे अग्री कर रहे हैं तो स्नेक खड़ा होकर कुछ उल्टा सीधा बोलेगा ही हाँ. क्योंकि इंसानियत को आदत है रेवोल्यूशन Okay, just out of curiosity, can we come up with an idea, may it be political, legal, social, whatever idea? Can we Huh. all come up with an idea that we all can 100% agree to? I think we can. नो We I can. don't think so. समथिंग दैट यू अग्री ऑन All of us, ओके wholeheartedly. फर्स्टली तो 100% पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे You know- जैसा उल्टा आदमी बोलेगा कि अगर सब इस पे एग्री करे तो मैं उल्टा जाऊं But here's a question, Ayush. When we say all of us, do you mean that it's just अपन तीन, अपन तीन. तो दुनिया में अपन तीन ही तब होंगे या फिर दुनिया में और लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं? अरे भाई उतना डीप नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ. अभी का आइडिया ढूंढ सकते हो तुम. Of course, मैं- ढूंढ सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर One सकते? of- I There think needs it is to a be fun activity. there needs to be something that we all oppose wholeheartedly together. Then we can come up with something that we all agree with wholeheartedly together. Yeah. What do suppose we that- wholeheartedly disagree to? This is a skill that debates teach. It is to oppose. And Huh. you see people who have drafted philosophies, who have drafted political ideologies, they They're generally are fools. people who love to oppose, who love Yes. to be a rebel. Yes. So that rebelliousness is innate in a particular thing. Wherever there is no rebelliousness, they are follower of a particular thing. As simple. You know? Arey, Sneh, I have this question. I do not understand this when I read it from Osho. Osho said that there's a difference between rebellion and revolution. Revolutions are all meant to fail. On the other hand, rebellions exist independently, freely. They are in their own way. They don't have any purpose. Okay, They just I'll tell you exist. this. I'll tell you this. There is a difference between populism and communism. Hmm. A populism is against elite. They Hmm. don't have a solution. A communism is a solution that is drafted on the basis of populism. So there is a rebellion to a particular problem. And then there is a revolution, which is a solution or an action on a particular rebellion. Wasn't communism a revolution? Yes, exactly what I'm saying. Communism is that's the why it is. revolution, populism is the idea. समझ रहा है पॉपुलेशन वो चीज थी कि जो उनको बोलनी थी और कहीं किस हिसाब से गई तो कम्युनिज्म के हिसाब से Hmm. पॉपुलिज्म क्या थी कि भाई इलीट्स बहुत ज्यादा राज कर रहे हैं उनको हटाना है लोगों के बारे में सोचना है तो कैसे ट्रांसफर हुई कम्युनिज्म की मदद से I to say that a rebellion is where you don't even consider that the I'm elites just raj giving kar an rahe hain example. in I'm this way. not like specifically pointing out. I'm just giving an example to make you understand कि rebellion और revolution में क्या फर्क होता है. Rebellion एक गुस्सा होता है. Rebellion एक idea होता है किसी एक चीज या किसी एक प्रॉब्लम के खिलाफ. उस आइडिया को शब्द में बदलने के लिए रेवोल्यूशन होता है. उस आइडिया को एक्शन में बदलने के लिए रेवोल्यूशन होता है. Hmm. A very interesting Crystallization example- of rebellion is revolution. Crystallization of rebellion is revolution. Is yeah, what I yes. think. Execution of rebellion is revolution. राइट दैट इज समथिंग वेरी सीन ईरान का ना बहुत सही एग्जांपल होता है जनरली रेवोल्यूशन के हिसाब से ईरान ज्यादातर एग्जांपल नहीं लिया जाता हाँ. ईरान में थियोक्रेसी आई उल्टा हुआ Yes. Yes. लिबरलिज्म से थियोक्रेसी आई वो Yes. समथिंग वेरी ऑब्जर्वेबल थिंग क्योंकि उल्टा बहुत कम होता है एंड फिर भी लोगों का खुश होना बहुत ही यूनिक बात है I think under all of these discussions, I think information plays a huge role, especially in today's time. So when you talk about Napoleon, for Huge example, नहीं, Napoleon, small बोल सकते हो no, it plays a I'll big tell you role. why. We look at history. What do you mean? Napoleon Bonaparte was considered to be one of the greatest generals out there.
in the French history, right? Hmm. The biggest strength of Napoleon Bonaparte was to manipulate information, was to control information. When he went with his campaign in Egypt, Here's the thing. no, let me finish. When he Yeah. when he went for his campaign in Egypt, they miserably failed. And when he came back, he was a hero because of that propaganda. He was able to become the king of the French Exactly my point. Republic, Now I'll tell not you the what. Republic, You have seen the but recent Napoleon movie? No, no, I'm no. not. I'm yet to watch it. Obviously, You it's right. watch it and you will realize that the director manipulated it such that it looks like Napoleon is a stupid kid. So just because information can be manipulated, it loses its value. It is a huge role when it comes to individuals. So if you want to do a rebellion, you need to have a certain information to convert into a revolution to make revolution successful. So specific to success and failure, information plays a huge role there. But when it comes to bigger landscape, just because information can be manipulated, it loses its value. Hmm. In next 10 years, I will continuously put forward propaganda that Napoleon was a loser, Napoleon was a loser, Napoleon was a loser. And your kid would realize Napoleon is a loser. You realize Napoleon was a powerful person because that is something that you have read. That is the information that you have gained that Napoleon was smart here, Napoleon was smart there, Napoleon was good there. Similar to Hitler. If you are considering Napoleon as a great strategist, why nobody talks about Hitler being the great strategist? And the thing here is that you That's just need information, please. you need a wider, I think, an open mind to discuss about such things because they are very sensitive again. Yeah. But you need an open mind if you want to come across such ideas. Like for example, there was also this was a topic in a group discussion round in Agifest that what Winston Churchill did was it worse than what Adolf Hitler did. And when I raise those questions, especially in front of those people who are sympathizers of colonialism, they Hmm. don't tend to listen to my questions. And especially for the people who have read the traditional texts and information regarding World War II, they consider Winston Churchill to be a hero, to be a braveheart who fought Yes. and stood up against Hitler when he came up with his air force, and he was able to stand up against them and win against Hitler when they took over France. But Right? not ignoring the But can atrocities that Hitler has done. Okay, we need to Don't, say don't of that. you? course Don't you? not. Of course not. But Don't you? do we take into consideration the atrocities that Exactly. were committed very indirectly Exactly. because the We don't. definition of atrocities is different It is all by about who won. Winston Churchill? No, exactly. Winners write the It history. is But Are we you? need all to bring about. up these arguments. It is not Imagine. about was I Hitler good. It is about was Winston Churchill bad. imagine this if actually the Allied powers did not win, and it Hmm. was Nazi Germany which won. Then today we might be considering Winston Churchill as the No, he as will the be winner. irrelevant. No, exactly, and would be People No, would considering he know. would. Hitler No, as the not hero. about Winston. Wouldn't we? Ha. You know who was the prime minister before Winston Churchill? Yes. I don't. I remember Let me his for those name. 3 seconds. Doesn't matter, right? That Doesn't matter. That's irrelevant. because No, it is relevant. See, no, that guy. Okay. That guy was very instrumental in the beginning of World War II. The annexure of Poland by Germany. Yeah. It was because of him that it was Yes. executed in the first place. He Yes, allowed it. He exactly. considered Hitler. Nobody knows Hitler this. was very smart, and he was able to convince that person तो यही होता that है. it is a fine thing. What he's doing is a fine thing. He was able to sort of manipulate तो and मैं ना ये convince him. अक्सर बोलता हूँ लाइक इन जनरल से मैं अक्सर सोचता हूँ कि रेबेल बनो अच्छी बात है, ठीक है, ये जनरल एडवाइस है, ठीक है, रेबेल बनना अच्छी बात है, रेवोल्यूशन करना अच्छी बात है, लेकिन ये समझ लेना कि अगर वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ ना तो तुम इररिलेवेंट हो, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना तो तुम भगवान बन जाओ। तो I रेबेल believe. एज ए क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसको भगवान बन रेवोल्यूशन जाओ में तो तभी तब्दील करना जब तुम्हें लगे कि तुम जीत सकते हो। See, I believe that the purpose of rebel is not to win. The purpose of being a rebel is just to be a rebel, and then The irrelevance purpose wouldn't even be a Hey, problem. Rebels lie in the shadows. People don't even know you about them. cannot explain They exist and die. like say for example you cannot explain a person you cannot explain a Muslim person about Allah, so you cannot question a rebel about being a rebel. According to What a do you rebel, it is all about winning. No. I It is think all I think about, you know what I'll tell you, I it think is the all confusing about angle is Casey. like, you know, getting that what is it called, I'm losing words, that approval from people. So, Sneh, I think Validation. that soon.
हम लोगों के बीच में ना अभी vocabulary का डिफरेंस हो रहा है. To you, rebel is what standard English dictionary says rebel is, right? That is a person who is different from the I crowd. don't even know what standard dictionary says rebellion. But you have a presumption about Basic that, right? understanding of what Yeah, rebellion yeah. is. Yes, Tell me. yes, right. So, in my opinion, rebel is not that. In my opinion, rebel is someone who exists apart from how the world exists. His opinions might overlap with what Very the true. world thinks to be I tell true, you, and his according to opinions me, might not overlap with that too. See, Sneh, His I think you opinions are a are rebel. his I think you opinions are are a rebel. I you. disagree I with don't you think something Sneh that is I a know rebel. No, your it is take no. on. I think Sneh is I, rebel. I It think is not Sneh is a about. revolutionary. See, it is not about disagreeing. It is, I think, an artist, a person who creates something. If you are creating Independent. something of intrinsic value, you are a rebel. True. Without True. being Which is the rebellious, basis of creation is action not creation. possible. Okay. I tell you, Exactly. ठीक है. But I'll tell you, what's the Rebelliousness mindset means of the same independence, rebel plus the detachment. creation. ठीक है. So creation comes up when you oppose something that is already going on. कि अभी लोग क्या करना चाहिए उम्र में, तो कि स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए. अब ये आदमी उठ के बैठ गया जो कॉलेज नहीं कर रहा, स्कूल नहीं कर रहा और अपनी कुछ चीज कर रहा है. ठीक है. लेकिन आदमी का इन्हें डर भी होता है कि भाई मैं यहाँ पे छूट ना जाऊँ, मेरी वो चीज मिस ना हो जाए, मेरी वो नॉलेज फिक्स ना हो जाए. उसकी वजह से आदमी कुछ ना कुछ एक्शन लेता है, जैसे एमयूएन में जाता है, जैसे बुक्स पढ़ता है वगैरह वगैरह. लेकिन आदमी के अंदर माइंडसेट क्या होता है कि मैं किसी रूम में जाऊं तो मैं उधर कुछ कम बन के ना रहे. इसीलिए आदमी को फोमो होता है कि मेरे को वो भी पता होना चाहिए, मेरे को वो भी पता होना चाहिए, मेरे को इस चीज का भी विरोध होना चाहिए, मेरे को इस चीज का भी पता होना चाहिए. क्योंकि आदमी चाहता है वैलिडेशन एट द एंड ऑफ द डे. तो इन जनरल सेंस जब भी दो आदमी डिबेट कर रहे हो तब भी वो आदमी इसलिए ओपोज करेगा क्योंकि उसको वैलिडेशन की चाहिए कि ये दो आदमी से ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ. कभी भी जब मान लो कि चीजें करता है, कोई एक्शन करता है, तो कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन के लिए करता है. बस डिफरेंस ये होता है कि कुछ रेबेल ऐसे होते हैं कि जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ मैं, और कुछ रेबेल ऐसे होते हैं कि जो बस हम क्रिएटिव काम कर रहे हैं क्योंकि हमको Okay. अच्छा लगता है. Sneh, Let's take it somewhere else. Let's take it somewhere else. Wait. I agree with what Sneh said, right? That is his definition of rebel. Okay, that is something that he owns up to himself, and that is something that he agrees with. Okay, in my opinion, rebel is not someone who cares about validation. In my opinion, rebel is that debater who would debate for the sake of truth. And if there is truth in the opponent's argument, he would humbly I'll say tell you that you something are about right. truth is not something that is valued. The person who speaks the truth is something that is valued. And rebel is the person who ये values मतलब ये truth होता in है itself. कि इन दोनों के हम दोनों की डिबेट में मैं सच को सामने ला दूं, ये पर्पस नहीं होता है. मैं सच को बोल दूं, ये पर्पस होता है. कहीं ना कहीं वो मैं आ जाता है, समझ रहा है कि सच को लाऊंगा लेकिन मैं ही लाऊंगा, सामने वाले And से I आगे say, तो मेरे and पास. in my definition, Sneh, that is what I'm saying. That is your definition of rebel, right? In my definition, So if the you ask the me, rebel does not have a concept of me. The rebel does not have that an is ego. not a debate. If you in a debate want, like say for example, if you in a debate want the truth to be out, nonetheless to be spoken from your end or the other party's end. But why are we restriction this? not Why are we restricting this argument to just debates? Because I'll life give in you an itself is example a to debate. make it easier for us to imagine. No, I think rebellion exists on the plane of debates only. No. No, I not mean, at all. it on a basic sense, it does exist on the plane of Not debates. just on the it planes depends of on debates. definition of Not debate just at on the the end of planes the of day. debates, yes. Yes, जिंदगी भी that debate is debate हो better. सकती है. हाँ क्या मतलब मुझे रिबेल करना मैं सिर्फ डिबेट करूंगा नो. हाँ भाई. No. I mean, debates ऐसे followed भी by डिबेट action. होती है ना, अपने दिमाग में भी एक डिबेट होती है ना. हाँ, अपने दिमाग में तो भी एक रेबेलियन होगा ना कि भाई कॉलेज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को आज भी फील होता है हाँ. कि कॉलेज जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए. तो ये अंदर की डिबेट है. See, a very intrinsic question. हाँ. एक सेकंड देव सॉरी टू इंटरप्ट यू. स्ने चैट में आई थिंक देयर इज अ गुड सजेशन फॉर यू. रुद्र का. रुद्र का है ना, मैंने पढ़ा. हाँ पढ़ा ना. आई थिंक इट इज अ गुड सजेशन. एक बार उसके बाद भाई चैट में क्या चल रहा है, ये सब क्या लिखा है इसने भाई आपके बारे में. धीरे धीरे लोग चले गए, ठीक है. तो अब हाँ, अभी तो जो हमारी अभी तक बातें सुन. तो ये जनरल मार्क होता है बैटिंग में हकता है मेसी का भाई है इसने. नहीं बैठ सकते. तो मैं जनरली करता नहीं उसने, लेकिन कन्वर्सेशन बहुत सही चल रही है तो मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता. कंटिन्यू. या यस, यू आर आस्किंग. So the question is, do you consider a rebel because you're purposefully doing what the society is not doing? So what I'm essentially asking is that are you a rebel because you're opposing the societal notions, or are you a rebel because you're thinking independently and you're doing what you think is the truth? Okay, This I'll tell you. So The definition yes, of once again यही the पे बात context. आती है. Once again the Information context. जो है ना, हाँ, information जो है ना, मैं जनरल एग्जाम, मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है.
ये हाँ वाली चीज को एक्सप्लेन करें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखना. Whenever you think of something, there is a flow of information there because information can be manipulated, and therefore truth can be manipulated. A singular person in their mind cannot decide what is truth. Right? Truth is something arbitrary which will only exist if you win. So if you win, your truth is the truth. The definition of truth keeps changing because whenever your truth is the truth, the other party becomes underdog and he could prove himself truth. True. Right? So in specific scenario, I become a rebel when I want my truth to be the truth. There is a my word there. I will be the one who will be bringing that. So according to me, say for example, Plato का कौन था गुरु? Socrates. 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 Okay. According to me, Plato is a way more of a rebel than Socrates. Socrates might have fought for it, but he was not able to tell it himself. If Plato is bringing that to reality, then Plato becomes the rebel. But Plato didn't put his name on it. He gave all the credits to Aristotle, and that's why we consider Aristotle as the rebel. Adding on to that point, I think the concept of individualism here, as they stated, those two definitions that you gave, that going against the notions of society Yes. or being Being yourself. individual. Whenever they Subjective. get together, So that is when you become a rebel. that Then you notion- become known as a rebel. And if you're not known as a rebel, then you're not a rebel. No, see, individualism is something, and I completely agree to this. If you're not known as a rebel by at least a single person, then you're not a rebel. Because when you go on the path of individualism, when you People go know on the path of getting your own version of truth, seeking, because see, again, as Sneh said, that truth it keeps on changing. So when you're trying to get that own version of truth, वो मैं वाला जो point है ना, my truth. When you try to get that, and that is a human tendency. That is a human tendency. That I want my version of truth. Why do you think conspiracy theories exist? Why do you think there are still people out there who believe that flat Earth exists? कि एंटार्क्टिका के आगे भी दुनिया है और अलग अलग प्लेन्स है दुनिया के. Why do you think people like that exist? Because they want their own version of truth. They want a taste of it, right? So when a person tries to get their own version of truth, they have two options: either to fight against society or seek their own truth. Yes. And I think the greatest are only rebel if they are successful to convince people that it is a flat. and in order to convince them, Until they that they are have to idiots. present that idea. Until that they are idiots. Until then they are idiots. 100%. Alex Jones. See, just a second. Alex Jones का बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं इस सिनेरियो में, ठीक है? Alex Jones said that they are turning the frogs gay. कि वो लोग तो सी, ये हंसी आई, मुझे भी हंसी आई थी, क्या बोल रहे हैं पागल इंसान, इसकी कौन सुने? But it turned out to be very true. The water system in the United States, when females ingest pregnancy pills, right, birth control pills, it leaves out estrogen in the water, and the water facilities do not have the infrastructure to filter out that estrogen. So the frogs, the tadpoles, they used to ingest that estrogen because of that water that people drink, by the way. वो नल के पानी पीते हैं ना वो लोग, तो नल के पानी में एस्ट्रोजन होता है. दैट इज व्हाई द टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ मेन आर ड्रॉपिंग, स्पर्म काउंट्स ड्रॉप हो रहे हैं. तो टैडपोल्स जब कंज्यूम करने लगे तो फ्रॉग्स क्वाइट लिटरली became gay. They quite literally started to change genders, and they started to change their gender identity and sexual orientations too. जनरली ये मेरे को ना ये बहुत लोगों से चिढ़ होती है कि लोग फीलिंग्स के बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हैं. फीलिंग्स क्या है भाई? फीलिंग्स अभी चेंज हो जाएगी. एंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन लिए हैं, और फिर मेरे को पता चला कि फीलिंग्स फीबल, और तभी मैंने अपनी लॉजिक या फिर अपनी जो उस टाइम की एग्जीक्यूशन है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया. There are ways of making decisions. Like say for example, you can try things and then make decisions. Right? Say for example, there are things that where people tell you on the basis of that you make decisions. All of that are way more feasible than going with feelings. क्योंकि लोग हॉर्मोन्स को इग्नोर ही कर रहे हैं. सारे डिसीजन, सारी चीजें फीलिंग्स के बेसिस पे ली जा रही है. वो अपने हिसाब से ही वो फीबल है, अपने हिसाब से इतनी खराब है कि कभी भी वो चेंज हो सकती है. True. पैशन की डेफिनेशन क्या है भाई? तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर है. जो चीजें पसंद, क्या घंटा पसंद है कुछ, तुमको पता ही नहीं तुम्हें क्या पसंद है. जब पता चलेगा तो तुम्हारी फीलिंग्स के बेसिस पे चलेगा. आई थिंक वो स्नेह तूने जो पॉइंट ऐड करा था कि तुम किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो गए, पागल हो गए, तेरा तुम फोकस करो एग्जाम पे. आई थिंक
वो पैशन वाला जो पॉइंट है ना, पैशन बहुत इंटेंजिबल है, क्या अभी बदल जाएगा फीलिंग्स के तुझे तरह। पता है ऑब्सेशन कब आता है? जब रिजल्ट्स आते हैं या फिर जब रिजल्ट की चाह होती है, चाह होती है। राइट? तो इस चाह बना ही रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। अब मान ले मेरे को ऑब्सेशन है यूट्यूब करने का, ठीक है, तो मेरे को रोज उठ के यूट्यूब देखना पड़ेगा। जिस दिन मैं किताबों में पढ़ गया ना 6-7 महीनों के लिए, तो मैं किताबें लिखने पे बैठ जाऊंगा, मैं यूट्यूब भूल जाऊंगा। तो ऑब्सेशन को भी बनाए रखना जरूरी होता है। ये ऑब्सेशन Consciously. बताते नहीं है कभी, इसीलिए लोग Talent is pursued interest. This quote is something that people need to consider. Talent is Of pursued course. interest. Talent So is not. pursuing something, that is when you get आई to that. पर्सनली थिंक यू शुड, लाइक मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, जो भी मतलब अभी क्या होता है कि इस उम्र पे ना लोग तुम्हें पूछने लगते हैं कि हमें हमारे करियर में क्या करना चाहिए। हमारे छोटे भाई बहन पूछते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि कभी ना अपनी फीलिंग से बेस पे डिसीजन लेना। तुझे क्या पसंद है, भाड़ में गया हो, तू किस में अच्छा है ये ढूंढ। जब तेरे को मिल जाए ना कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, दूसरों से वो चीज कर। क्योंकि जैसे तेरे को सक्सेस मिलने लगेगा ना उस चीज में, क्योंकि तू उसमें अच्छा था, तो अपने आप से ही वो पैशन बन जाएगा तेरा। और जब तेरे को इंटरव्यू लिया जाएगा ना, तब तू यही बोलेगा कि आई फॉलोड माय पैशन, वो मैं जीत गया। लेकिन जनरल रीजन ये होता है कि तूने कुछ ऐसी चीज की थी जो तू जिसमें तू अच्छा। So, Sneh, a genuine question here. So, the principles of tenacity and perseverance, उनका क्या? So, for example, athletes का example ले लो. अगर कोई athlete है, he is very good at his sports, is great, getting great results. But when he gets on greater levels, like for example, एक बच्चा है, ठीक है, he thinks that he is really good at baseball. ठीक है, यूएसए का सिनेरियो ले लो, वो बेसबॉल को परस्यू करता है क्योंकि वो उसी में अच्छा है। वो उसको पसंद नहीं है बेसबॉल, पर वो अच्छा बॉडी इसलिए उसको है। सूट करता है। हाँ, उसका बॉडी अच्छा है, जेनेटिकली गिफ्टेड है, इसलिए वो बेसबॉल में जाता है, हाँ, ठीक है। हाँ। हाई स्कूल तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉलेज में क्या देखा, कंपटीशन है क्रेजी, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुरे टाइम में भी मेहनत करने के लिए रेडी है, और वो बुरा टाइम फेस करने लगता है। ठीक है। तो जब वो बुरा टाइम फेस करने लगेगा, तब ऐसा नहीं आएगा कि मैं अच्छा हूँ इसलिए मैंने इसको परस्यू किया, तब जरूरी होगी वो इंटरेस्ट की। ठीक है, अब मैं That I, बताता हूँ। even in through the hard times, I want to pursue it. I enjoy struggling. वो मार्क मेसन की सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ है ना, उसमें तुम अगर पढ़ोगे ना, तो you'll get to realize के he said this one particular thing, that do something in which you enjoy struggling. तो स्ट्रगल भी इंजॉय करना बहुत जरूरी है। हाँ, Choose वही your मैं बोल रहा हूँ। struggles. देखो Choose your एंजॉयमेंट struggles, yes. ऐसी चीज है ना, ये मेरे लिए तो एंजॉयमेंट ऐसी चीज है कि जब मेरे को रिजल्ट्स मिलता है ना, तब मुझे एंजॉयमेंट। तो मेरे स्ट्रगल्स का अगर कोई आउटकम ना हो, तो मेरे लिए वो एंजॉयमेंट नहीं। अब आउटकम फैब्रिकेटेड भी हो सकता है। अब मान ले मैंने एक चीज पे बहुत काम किया और फिर मैं खुद को कोई अमेजोन से गिफ्ट खरीद के दे, तो दैट इज रिजल्ट, राइट? दैट इज अ गिफ्ट फॉर ओनली देन आई लाइक टू डू द स्ट्रगल। इन जनरल सेंस स्पोर्ट्स में ही होता है। मान ले बेसबॉल का एग्जांपल ले, तू अपनी क्रिकेट का एग्जांपल, तू क्रिकेट खेलना शुरू करेगा तो तेरे आसपास 15, 20, 30, 50 लोग हो गए जिससे तू बेटर खेल रहा हो, मान लो, तो तुझे ऐसा लगेगा कि तू इस चीज में अच्छा है। और अच्छा है तू, क्योंकि तू 50 लोगों से अच्छा है, तेरे इन्वायरमेंट में 50 लोगों से अच्छा है, तो तेरे को वो चीज फॉलो करनी चाहिए, तू फॉलो करेगा। ठीक है, फिर तू दूसरे क्लास में जाएगा जहाँ पे और 50-100 लोग ऐड होंगे, उसमें तू मान ले तीसरा आ रहा है, तो तब आएगा तेरा परसिवरेंस, तब आएगा तेरा हार्ड वर्क, जो तुझे उन लोगों से बेटर बनाएगा। क्योंकि तू परसिवरेंस कर रहा है, क्योंकि तू ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए तू बाकी के जो 2 लोग हैं तेरे आगे से, उससे बेटर हो जाएगा। तो बेस्ट की डेफिनेशन उधर आ जाती है। तो उधर तू मान ले पहुंच गया, फिर आते हैं हजारों लोग तेरे सामने, उसमें तू मान ले 1000वां है, तो तेरे को उतना ही ज्यादा परसिवरेंस, उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, ताकि तू उन 1000 को बीट करके पहुंच, और तब तू 11 में पहुंचेगा, और तब तू इंडिया में। बस अगर उधर परसिवरेंस रुक गया तो वो पैटर्न रुक गया। लेकिन आया कब, जब तू 50 लोगों में बेटर खेल रहा था ना, तभी तुझे लगा कि तुझे क्रिकेट फॉलो करना। जब तुझे लगा ना कि तू अपनी गली में सबसे अच्छा खेलता है, तभी तुझे लगा कि क्रिकेट एज ए करियर मुझे परस्यू करना। बाकी हमारी कन्वर्सेशन अपने अंदर चलती रहती है कि हम पागल हैं, हम पागल हैं, हम पागल हैं। तो अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं, तो मैं उसे परस्यू नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये करने गया तो मैं पागल हूँ। तो अगर मैं अपने गली में भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो मैं कभी क्रिकेट परस्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं पागल हूँ, तो वो डिसीजन मैं कभी लूंगा आउट ऑफ। See, I think what you're trying to say here is very practical. बहुत सही बात बोली. I But tend to be there, practical. like every idea, it is important to address. Like every idea, there are certain exceptions too. For example, Exceptions अलग चीज है। A.R. रहमान हो गया, नहीं, अरिजीत सिंह हो गया. नहीं, मैं बताता हूँ ना, A.R. रहमान हो गया, अरिजीत सिंह हो ठीक गया. है।
Do you think Arijit Singh was a good singer बचपन से? He was not. He Do you worked think upon it. there is Arijit Singh की family में someone who is better singer than him? I think, see, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, I'll tell you, it is depends on his no, environment. environment एक see, ये एक ऐसी चीज है, आपने जैसे बोला कि इफ यू आर बैड एट समथिंग यू विल कॉन्स्टेंटली थिंक यार मैं पागल हूँ, मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, राइट? तो दैट थॉट माइट हैव इवन पॉप्ड अप इन अरिजीत सिंह हेड व्हेन ही वाज सिंगिंग बैड, व्हेन नो वन अप्रिशिएटेड हिम। एनवायरनमेंट में आप बोल रहे हो ना, वैलिडेशन वाला पॉइंट, तो अगर आप बुरा गा रहे हो, नहीं जानता कि no one appreciated him. मुझे सो नहीं, मैंने पब्लिक लोग तो मुंह पे बोलेंगे ना भाई, अगर अरिजीत सिंह बोल रहा है मुझे सिंगर बनना है, तो उसका कोई घर वाला बोलेगा ना कि बेटा नहीं इंजीनियरिंग कर ले, तू नहीं है अच्छा। जो इंटर में बोलते अलग चीज, ठीक है, तुझे वो वीडियो क्यों मिला? क्योंकि तू उसको कब कंपेयर कर रहा है? आज के अरिजीत सिंह से कंपेयर कर रहा है। वो अरिजीत सिंह का वीडियो भी क्यों बना? क्योंकि वो उतना तो गा सकता था कि वो कैमरा खोल के उसमें हिम्मत थी बोलने की। क्यों तेरा वीडियो नहीं है कोई गाने का? क्यों देव का वीडियो नहीं है कोई गाने का? नहीं, सुन, हम तीन में भी हम दोनों गाते खराब है, समझ रहे हैं? आप क्या बोल रहे हो बेसिकली, आप जो बोल रहे हो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सी, डिटेल्स का प्रॉब्लम है। in any case. I'm नहीं, saying your example of exception is something different because you No. don't know context of that exception. नो, आई डू, कॉन्टेक्स्ट पता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे कमी होती है ना, वही चीज हो गई कि अरिजीत सिंह ने जब व्हेन ही स्टार्टेड सिंगिंग के उसको आई हैव इंटरेस्ट फॉर सिंगिंग, इवन दो आई एम एन एब्सोल्युटली हॉरिबल सिंगर, मैं नहीं अच्छा गाता, बट आई हैव, बता रहा है तेरे को? ओके, Who is telling you that? वेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ is telling you भाई, that he is not a best singer. भाई एक सेकंड, जब वो चालू कर रहा है एज अ किड, एज एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स से ही इज नॉट अ गुड सिंगर एट ऑल, एंड वो उसमें हिम्मत, एंड ही इवन रियलाइजेस दैट आई एम नॉट अ गुड सिंगर, और वो उसमें हिम्मत है कि वो जाके YouTube पे वीडियो बना रहा है और YouTube पे लोग उसको 10 गाली देंगे, भाई तू बेकार गाता है, छोड़ दे। अच्छी बात है, ठीक है। अभी द थिंग हियर इज कि इफ अरिजीत सिंह वाज अ बैड सिंगर, it was not because of the results that he continued to pursue that career, it was because of the passion he had for singing, that he stood there and decided. You are talking about Arijit Singh right now, or else you will be the same guy like Tintin. हाँ, पर सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर अरिजीत सिंह भी ऐसा सोचा होता कि रिजल्ट के बगैर कुछ होता नहीं तो वो अभी पहुंचा होता, अभी हम बात भी कर रहे हो तो उनकी नहीं, वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो परसुएशन करना ही है, लेकिन परसुएशन ना कर पाओ तो तुम्हारा ये माइंडसेट होना चाहिए। बट रिजल्ट इज नॉट द सोल मोटिवेशन, द सोल, there can be people without expectations and motivations of results who are still willing to work hard. They know that मेरा इसमें कुछ होने नहीं वाला, but they will still work hard. Why? Because they're obsessed with it, not because they're good at it, because they enjoy it. Obsession का Okay. इसलिए this is, I think Ayush has a very good point. I mean, imagine this. क्या ऐसा हो सकता है when someone is not oriented at all about the result and the result is actually nil, or should I say negative, and they casually do something just for the fun of it and they casually become the best at that thing. ठीक है, ओके, I'll tell you, ये जो, चलो इसको ना एक नाम देते, ठीक है, पागल नाम देते इसको, ठीक है, हाँ, नॉट यूजिंग इट एज अ डेरोगेटरी टर्म, आई एम जेन्युइनली, मैं खुद को पागल बोलता हूँ, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, हम भी तुझे पागल बोलते हैं। एक पागल जो रिजल्ट्स नहीं देख रहा है फिर भी उसको मेहनत करनी है, तो उसका क्या होगा? ठीक है, ये मान लेते हैं, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो इडियट वाली कन्वर्सेशन है, उसमें उसको कन्वर्सेशन में ऐसा लगता है कि वो इडियट नहीं है जब वो ये काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो रिलेंटलेसली जा रहा है, जब उसको लोग बोल रहे हैं कि तू गलत जा रहा है, फिर भी वो जा रहा है। उसके लिए रिजल्ट्स वो नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, उसके लिए रिजल्ट पब्लिश का बटन हो सकता है, उसके लिए रिजल्ट माइक के सामने खड़ा होना हो सकता है। True. उसने अगर वो कर लिया, उसने अगर वो वीडियो पब्लिश कर लिया, तो वो ही उसको रिजल्ट मिल गया, उसके बाद लोग क्या बोल रहे हैं उसको तो कभी मैटर करता ही नहीं था। ये होती है पागल की डेफिनेशन, पागल इस हिसाब से सोचते हैं। ठीक, अब मान ले पागल को हटा देते हैं और आते हैं कि कौन सा पागल जाना जाता है एक जीनियस के नाम से, कब? जब वो अपने हिसाब से जो हमें लगता है ना कि रिजल्ट है उसका, वो जब उसको मिल जाता है ना, तभी वो पागल जीनियस बन जाता है। एंड तभी मैं एग्जांपल लेता हूँ ढिंचक पूजा का और अरिजीत सिंह, दोनों की रिजल्ट शायद चेंज नहीं होगा, पब्लिश का बटन कि उन्होंने पब्लिश कर दिया, उनको रिजल्ट मिल गया, और दोनों शायद एक टाइम पे स्टार्ट कर रहे, दोनों पागल है उतने, लेकिन एक पागल सक्सेसफुल हो गया और वो उसको इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे वो बोल सकता है कि मेरा सिंगिंग बहुत खराब। क्यों वो अभी बोल सकता है? क्योंकि उसका सिंगिंग अभी बेटर है और वो सक्सेसफुल हो गया। ढिंचक पूजा का सिंगिंग अभी बेटर नहीं है,
तो अभी वो उसी स्केल पे है, इसीलिए वो खुद इंटरव्यू देके ये नहीं बोल रहे कि मेरा सिंगिंग खराब था, मेरे को परस्यू फिर भी नहीं किया, और मेरी रिजल्ट पब्लिश बटन था, whatever. So there is a scope of improvement that comes up there. हाँ, that is just Pagal who right? improves, a pagal who improves becomes genius, and a pagal who keeps doing stays pagal. And that is the thing. Does the pagal have to Yes. So want to have the perseverance results in doesn't. order to improve Yes. So perseverance doesn't make you successful. Perseverance plus with improvement results? plus 10 other factors makes a pagal a genius. So that is my point. I am saying persuasion doesn't make you a successful person. I am saying persuasion with a lot of other things makes you Agree. genius. So obsession in itself is स्नेह not enough. स्नेह अभी आई हैव टू लीव, यस यस ऑफ कोर्स, थोड़ा आई लव काम यू आ गया एमसी इसलिए। मौसम भाई, कोई नहीं है, अब 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे जो पता नहीं क्या कर हाँ, रहे हैं, उसमें मुझे से एक दिखा मैं भी हूँ, नहीं, चलो फिर उसमें कोई से नहीं एक है, मैं भी हूँ। कोई नहीं बैठा हम है। दो देख रहे हैं स्ट्रीम को। डीप अ, डिस्कशन हो गया। नहीं हितार्थ I बैठा guess. है। अच्छा, नहीं नहीं, एंड कर स्ट्रीम, आई हैव टू हाँ हाँ, डन डन डन, ठीक बात है, चलो करनी भाई, तेरे थैंक से। यू सो मच, बहुत वीडियो मजा एंड मत आया भाई। करना बट। बस ये ना अपलोड हो जाए, बस देख लेना, ठीक है। वी विल हाँ, एंड द स्ट्रीम, मेरा थैंक यू सो ऑलरेडी मच चैट। 99% अपलोडेड। यस, थैंक यू सो Yes, मच it is चैट, हम uploaded. तीनों का हो गया 99। थैंक यू हाँ सो मच चैट फॉर बीइंग हियर। मजा आया तो अपन ये और एक बार स्ट्रीम करेंगे। डू पोस्ट इट इन द कमेंट्स इफ यू लाइक द स्ट्रीम और नॉट। कमेंट में पोस्ट करना, चैट में अभी पोस्ट मत करना, ठीक है, ताकि मैं पता चले कि सही गया कि नहीं स्ट्रीम। बाकी कल लॉन्च है भाई, आ जाना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे 6 अरे बजे। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बता दो यार हमको। यस, नहीं हम नहीं बताएंगे अभी, ये स्ट्रीम पे ऑफ जाना तो फिर बताते हैं, ठीक है। श्योर। ईस्टर एग्स तो मैं वैसे भी ड्रॉप कर ही रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो हाँ। मच फॉर बीइंग हियर भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।